A very good afternoon to one and all who is joining us for our live broadcast of the first semi-final of the 16th Hockey India Sub Junior Women and National Championship. It's going to be a good day because it is a match for our entry into the final, and it's going to be two great teams who are locking horns, and it's Hockey Association of Orissa who are up against the Hockey Madhya Pradesh. With the mic, I'm Mayur Barua to carry through the chores of the whole contest of the first semi-final as a look at both the match officials, including only going to be some good contests. It will be the other end will be two great match officials. There will be Miss Nitu Kumari also that we saw on the picture. That's Miss Nitu Kumari warming up. She knows today she cannot be handing over too much of the green cards or the yellow cards that she did in the first quarter final. They're all going through the paces, and it's a good final. This is an important final, semi-final. That's why all the girls are just trying to beat her on what can be a very important one. We're just waiting for the clock to tickle to 2 p.m. and all this action are coming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India, right from this wonderful sunlit, sun-kissed, bright and blazing AstroTurf at the Marang Gomke Jaipal Singh AstroTurf venue here in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. And what good game if I have to reflect back before we get it all started. Orissa 4-0 victory versus Andhra Pradesh. And then a very, very good encounter 2-0 versus Punjab. And then in the quarterfinal 8-1 versus Maharashtra. With a blow of the whistle from the umpire, it's a pushback which has started. In the Blues playing our Hockey Madhya Pradesh in that white, pink and blue. All mixed colors playing Hockey Association of Orissa. Talking about Madhya Pradesh, they started off with 6-3 versus Manipur, and then a very good victory 5-1 versus Haryana. Same scoreline at the quarterfinal 5-1 versus Mizoram for the girls from Madhya Pradesh. And you have to see it's a nice sea of colors that I've gone through for all the great names. If I have to start off for Orissa, Archana Kuzur has 3 goals, including a penalty corner. And in the quarterfinal, it was out of 8 goals. It was Priyanka Minch for Orissa. As I see, it's an attack from Hockey Madhya Pradesh. It's a lovely pass. This might be the first one. Goalkeeper. Oh, she was trying to scoop it towards a colleague who was right at the center. Madhya Pradesh immediately on the attack. 2 good teams who are now vying and competing in the ticket entry for the final. And it's Hockey Madhya Pradesh who gets the first penalty corner advantage. I haven't gone through the paces. For Hockey Madhya Pradesh, it's Nausan Naz who has a total of 8 goals, including 4 penalty corners for her and 4 field goals. It's going to be a very, very good names. We'll get the lineups very soon. And at that time, I can just vouch for who, as the injection has been done, it's been stopped, and trying to make a small little of a tomahawk there from the right flank as the face marks from Orissa just goes out. This is going to be some contest. Still at quarter number 1, and you can feel the heat coming in already. This will be really, really nice. I'd like to also thank the Jharkhand government and also the Sports Authority of India for their able support of getting through the paces for the girls and a lovely platform. And after this, we'll be having the 16th Junior Women National Championship, which is going to happen in Pune in Maharashtra. So that's also, we'll be seeing some great names coming up. And not very surprised, to be honest, that these teams have gone and now vying for this all-important for the final slot at Orissa, trying to make a counter-attack. It's a nice reverse back pass the center line from the left to the right. They are going to defend is Orissa. That means Hockey Madhya Pradesh are now attacking from the left to the right of a picture. From the right to the left, it will be Orissa. But they haven't invaded into the territory of Madhya Pradesh until now. Trying to slam the ball, gets inside the 23-meter circle. Can they make a striking entry?
tries to make it from a long distance, just at the edge of the D. It's going to be good. It's going to be a moment where I might be just drowning with my voice. In the second semi-final, it's Jharkhand who will be playing versus Uttar Pradesh, and with the mic will be a distinguished commentator in Hindi who also resides in Ranchi, Mr. Shamim Alam. He will be getting with the mic behind for all the four quarters. And for all these four quarters of this important contest between Orissa and Madhya Pradesh, this is me, Mayur Barwa. It's really good as the contest just goes up to some nice decibels. It's always good to reflect on how the girls have performed, and it is so nice in the how Madhya Pradesh has gone in. If I have to tell first up about Nausi Naz, I'm sure as you have heard before, 8 goals out of out of the 16 goals that the girls have hit, including 4 penalty corners. We'll talk about that very soon. Madhya Pradesh in ascendancy. Urisa lost well to get the ball and revolt it back after the danger zone. There is a slap which comes almost from the center. Madhya Pradesh, this is the second time they have made an entry. They've also got a penalty corner advantage which couldn't get converted, but they are very much on the move or some good counter attack. Can Orissa come up to the paces to great teams which are competing? Two teams who have been investing hugely on infrastructure, on the talent pool, as their respective states have fueled up the sports infrastructure in over the years, and the results are all there for to see. It's a nice diagonal cross entry for Madhya Pradesh right from the corner of the right flank. Striking circle entry has been done, trying to push it. It's a nice slap pass getting onto the feet of Orissa, and Miss Nitu Kumari onto the picture. She says it's a penalty corner. And it's the second time the girls in blue are again forming a huddle to get it moving. And talking about Nausi Naj, she's from the district called Shivni, and she is the sixth child among 9 of them. And and, and Mr. Paramjit Singh, if you have to say, he has been at the forefront of selecting the talent pool of mostly of Madhya Pradesh, and he really deserves great accolades. Let's see what happens from here on. The injection has been done. Orissa has done favorably a nice job to make that important entry. And talking about Nancy Naj, she has been talent scouting. She got selected for Madhya Pradesh Hockey Academy. She's been groomed by Mr. Paramjit and was also recently the West Zone Ashmita League winning team, which they won, and also won the Nehru Under 17 School Hockey Tournament in 2024, and then was also featuring in the 14th Sub Junior National Championship. And right now, she is under the tutelage of Mrs. Vandana Kataria, who's also a senior coach in the Khelo India Center for Excellence under Sports Authority of India. As I can see, Ms. Nitu Kumari has signaled for a video referral. Less than 10 minutes remaining in the first quarter of the first semi-final in the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. Orissa 0, Madhya Pradesh 0.
We did get it from Miss Nitu Kumari. And so Madhya Pradesh now gets another chance to try and check a polite entry. This is Nuta Kumari as is assisted today by Miss Sonali Singh. Reserve umpire is Miss Sonu. All ready for the injection. Madhya Pradesh stops. So there is no drag flick here coming forward, trying to slap the ball. It is good from Orissa. It's still trying to put it against the name. I've got all the names now. For Orissa, number 14 is Sweetie Kuzur. You know how she's good enough, isn't it? Sweetie Kuzur. Already, Sweetie Kuzur has 2 goals under her tutelage. I mentioned Archana Kuzur, 3 goals, including a penalty corner. Priyanka Minch in jersey number 12 in a great position. She's a lovely midfielder in there and leading from the front. 2 penalty corners, 2 field goals for Priyanka Minch. And they got 9 penalty corners in the 2-0 victory versus Punjab, 10 penalty corners versus Andhra Pradesh. And versus, if I say Madhya Pradesh, they got 6 penalty corners in that 6-3 win versus Manipur, 3 penalty corners in that win of 5-1 versus Haryana, and then 4 penalty corners in the last quarter-final versus Mizoram, which Madhya Pradesh won 5 goals to 1. And let's also give credit to Mr. Vijay Vignesh, who is the strength and conditioning coach of Hockey Madhya Pradesh. So well done. The strength is important, and the conditioning of all the girls are also so very important as they get into the rigors of the sport of hockey. So well done. I remember meeting Mr. Vijay Vignesh 2 years back in the 14th edition of the Junior Women National Championship. With him was Mrs. Bandana Kataria, also very nice management people, always smiling, always confident, and you can feel the vibe. They're such a confident bunch of, the leadership, and that's why not surprised that Madhya Pradesh have been everywhere. Recently at the Khelo India Tribal Games, they've also the spun off so nicely. They've earned laurels for the state, and of course, it will mitigate all in the general cause for the country, for India. So you see those usual names, isn't it, coming up the ranks, like Keshar Bhaber, who was there in the recent Khelo India Tribal Games. So there's been really good influx of players who have coming in. And as I mentioned, Norshin Nas have been stupendous with her gameplay. 16 goals in total of 3 matches, out of which 8 has come from the stick of Norsian Nas. And out of 8, 4 has been through penalty corner. So she has been a tremendous specialist. And so Madhya Pradesh has been time and again trying to invade into the home of hockey, Orissa. So don't be surprised if it comes from the blue and black of Madhya Pradesh very soon. But again, it's about the final, getting into it. So we're pressing very hard. No moments of respite, no honeymoon period for anyone. They cannot be showing any rustiness also. It has to be going into one signified portion to significantly try and romp as many goals as possible, and then try and make your name into the finals. As you can see from the corner, Miss Ritu Kumari whistling it up, trying to break the bondage. Hockey Madhya Pradesh with the ball, with the stick, going along very nicely. And I believe that's Mansi Saroj with the ball. No. Priyansi Bhavar, also one name which sparks up in jersey number 12 for Madhya Pradesh, who has been splendid, recently featured again in the inaugural edition of the Khelo India Tribal Games, a great initiative under Sports Authority of India and the Ministry of Youth Affairs and Sports. Also like to thank the Hockey India. We recently finished 100 years of glorious existence, and major thanks to all the office bearers, including the president, Dr. Dilip Kumar Tirki, and also Mr. Bholanath Singh, the general secretary of Hockey India. 0 for Orissa, 0 for Madhya Pradesh, with 5.5 minutes remaining in the quarter number 1 of the first semi-final played of the 16th Hockey India Sub-Junior Women National Championship 2026, live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India.
But the center line is Orisa. That's trying to get the ball going. That is Nikita Barla, another very good name, which is coming up in the ranks of Indian women's hockey. Playing very well. Sweetie Kuzur, Deepika Page, Princess Priya Ekka. Great names from Orissa. Have really done wonderfully well in that striker position. And you'll be having those rolling substitutions. As you can see, two players just going out in the corner, and two of them from Orissa coming in to replace immediately. All game set match going here. It's bright, it's sunny. Again, that's Nikita Bala with the ball trying to speed through the defenses of Madhya Pradesh. And well done, I would say, Orissa, of not allowing Madhya Pradesh to gain the momentum which they earlier, seriously, they were getting in. And if I have to again break down in that 6-3 versus Manipur for Madhya Pradesh, the first goal came via penalty corner from Nausin Nas, then a field goal, consecutive field goal from Bhavika, then again consecutive penalty corners, first from Noshian Naz and then Jagriti Yadav, and then a field goal from Noshian Naz in the 6-3 victory. So two goals were scored in quarter number one, a goal each in quarter number two and quarter number three, and then two goals in quarter number four. So summed up beautifully. And remember, the Manipur were leading by 2-0 in that match, and then came with a bang was Madhya Pradesh. And in that 5-1 Haryana win, two goals each for Nosh and Naz, and a goal each, and a goal for Gitashri Nami, and two consecutive goals of goal number 4 and 5 for Priyashi Bhavar. And in the quarter final, which they won versus Mizoram, 5-1. There are two goals in quarter number one and two goals in quarter number two, and a goal in quarter number three, with three goals, including two of penalty corner going to Nosh and Naz, and a goal each to Gitasri Nami and Keshar Bhabar. Scared names, so they'll be knowing how to bifurcate of the goal section. The wins, they were demarcating one goal each in quarter number one, two, and three, and two goals in quarter number four for Haryana. Orissa also done well here with Suiti Kujur, Princess Priyaika, Deepika Page in penalty corner, Archana Kuzur getting penalty corners and field goals respectively. But Priyanka Bain should be the name in quarterfinal everywhere. She was, wherever she went with the long locks, she was heading in front, reaching. So Maharashtra had a very tough time versus Orissa, which they lost one-sided, 1-8 versus Orissa, as they easily qualified for the semi-final. And now playing versus Madhya Pradesh, who has been very, very strong. 2 minutes and 13 seconds to go by for this quarter number one to finish. It's been a good game until now. Bit of a slow halt in the middle as the ball is getting now twisting and turning, trying to go past the center line, and the girls are trying to be a little upbeat more in this occasion. The expectations will be weighing very high, because all eyes will be on that all the important, of course, the segment is all about how you get it and you gain yourself. It's really, really not going to be easy at all. But what can the girls say of making it live and prospectively well? See how they just move, and it has to be a very, very good movement, to be honest. The girls, with less than now 80 seconds remaining, Orissa trying to get a bisection done between the corridor of Madhya Pradesh. Not easy. Again, you can see three defenses behind, three in front, and trying to make the stick very work nicely. It's getting quicker, and it's not slowing up. The vibrancy is not slowing up. Madhya Pradesh, it's a lovely free diagonal straight across. 23-meter circle has been dodged inside the striking circle. She's trying to stick it up, making a tomahawk, but straight into the goal post, into the corner of the goal, to the right at the corner. Not easy. Oh my goodness. This is what it needs to be. I'm sure so near to the goal post. It was a torrid time. I believe
The goalkeeper there was Nita Maji, number Yuno. At the other end is Mahak Parihar, the Hockey Madhya Pradesh goalkeeper. Just 4 seconds now remaining. Way to finish now. Single seconds finishes up as the girls suddenly apply brakes to the movement. You understand that it's end of quarter number one. So 2 minutes for the girls to again re-strategize themselves. As you see, Miss Nitu Kumari walking right to the center, and she'll be joined by Miss Sonali Singh and by Miss Sonu. We'll take a breather. This is Mayur Barwa. I'll be coming right back for quarter number two for all those action coming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. So stay tuned. Welcome back to quarter number two of the first semi-final, 16th edition of Hockey India Sub Junior Women National Championship. As Miss Sonali Singh raises her hand, blows up the whistle as it goes right to the eardrums of all the girls, and it's a pushback to start off from the right to the left. Is Madhya Pradesh defending, getting onto the wrong zone, the angle, and they know they've made tries. They've got two penalty corners, the blue and the black of Madhya Pradesh. Still in search to open the scoreline about the girls. There's a nice aerial scoop and falls in right between two of Avurissa's center forwards there. Past the center line. The stick work is very happy. Orissa are attacking from the right to the left of your picture. From the left to the right, it is Hockey Madhya Pradesh to make you again go through. And until now, we have seen some good brand of hockey. I'd say the position has been 60-40. If I have to clearly say, initially it was Madhya Pradesh getting into 70-30 zone, and virtually you have to say 75-25. But now it's almost at equals, not because it is 0-0, but because of the way Orissa have been able to revolt themselves. Orissa trying to be on the top of the game, as I say, almost getting a nice snatch on the ball. Madhya Pradesh defense comes to the fore, and the ball gets out of bounds. The ball will be loving to get into the shadows because it will be facing the brunt of the heat from the sticks of the girls. It is a semi-final. Just one step away after this will be to win the coveted trophy. Let's see. At the other end, it will be the girls, the home girls from Jharkhand, who will be playing at 4 p.m. versus Uttar Pradesh. They have also done really well. Jharkhand defeating Punjab yesterday, and then Uttar Pradesh defeating the northern India counterpart in the Delhi NCR region, Haryana. That was again a very close contest at 2-1. Uttar Pradesh getting that goal in the minuscule of minutes. And what a rejoicement it was. It was fingers, and it was nail biting. Edge of the seat, thrilling encounter. It was. Let's see what the girls now have here. 12 and a half minutes for the half time to go.
trying to cushion it up. It's a nice slam. It's a long pass. Gets a deflection of the stick of Urisa. Again, the center forwards coming, trying to tackle the ball, trying to dodge it fine is Madhya Pradesh, but still not getting that benefit, the day where that injection, that insertion, that much needed uprise of the ball to be carried forward in a zigzag fashion. This is where I believe Orissa has done profoundly well. Inside the striking circle, trying to retrieve. It was it. Oh my goodness! There's a center attacker who dives like a swimmer. Did put her longest part of his stick, but the ball went away. Like a whimper. Madhya Pradesh are absolutely lucky that it didn't become 0-1. Orissa still making the clouds, dangerous clouds, looming hugely on them. As a penalty corner has been signaled by Miss Sonali Singh. And now it will be for the Archers of Madhya Pradesh to guard their protect their territories. Orissa gets the penalty corner. Oh, if not for the field goal, they might just fancy the chance for a penalty corner. The girls from Orissa. What a game it has already started. Quarter number one was fearless. Quarter number two getting more attacking now. Let's see, we'll be getting it. Who is there for Orissa to make the injection? Cannot see the jersey number very appropriately, to be honest. But already for injection, it was not good. It was bad. The injection was not good at all from Orissa. Still inside the striking circle. Trying to slam the shot. It will be very nicely guarded by the goalkeeper. Still it's tickling along. Oh, penalty corner. Again, question being asked from Madhya Pradesh towards Miss Sonali Singh. I believe that's the captain. Yes, Salini Singh, the captain, asking a question, and she's asking a timeout. And there is a video referral signal also. The T comes in. Oh, what a game. What a game this is. 11 minutes and 5 seconds remaining for the end of second quarter. And this time a question being asked from my deputy saying that it shouldn't be a penalty corner. Let's see what happens from the top. The game is absolutely booming and breathing alive. Don't blink an eye as you look at the replay of where the infringement has happened. And and scrutinizing eyes of Miss Sonali Singh. I believe this is where it has really come from. Well blocked by the goalkeeper. This, I believe, it has gone right into the legs of Madhya Pradesh. If I could see it from here, that's what they're saying. But Madhya Pradesh have asked for the referral. Let's see what happens. 0 for Orissa, 0 for Madhya Pradesh. And the penalty corner stays. Madhya Pradesh lose that important review. Oh, seriously, it's a huge turnaround. To be honest, the way it has just gone on, this is not that it was to be. But what a handful of memories it is. Let's see, injection has been done. Stops. Tomahawk attempted from the hands or the gloves or the stick of the goalkeeper. Nicely done. Penalty corner averted. And this is now making it spotifyingly well of how it will be just getting up and going right to the corner. This can be a very important segment of the gameplay. Let's see what happens. It's really making some timers count. And what does it count for? And we know
Saying my Madhya Pradesh still trying to put it well along. Can it be gel enough? What does it say now for the girls? Can it be a huge spring in action? Does it provide all the important parts enough for them to seek any concerns, and or does it in fact do it? Let's see. Have to be very very polite, I believe. Very nice picture. Nicely along onto that. Sometimes the graphics also doesn't make it too easy to count along in a straight line. Diagonal pass gets through the striking circle. Orissa and Madhya Pradesh still trying that score line to move from 0 to 1, and I believe this is what you're looking forward to. You always love it going, isn't it? We'll be talking more of how the how Madhya Pradesh has been instilling so much into their academy. We did talk about Norshi and Naz, who have scored 8 goals. And what about Priyanshi Bhavar, part of the Madhya Pradesh academy for the last 2 years? Very agile, very speedy. In the first game, she scored those two crucial goals we did mention against Haryana, and recently she did play in the inaugural Khelo India Tribal Games in Raipur in Chhattisgarh. And then Keshar Bhavar, she also was the one of core member of Madhya Pradesh who played the Khelo India Tribal Games in Raipur, and been one of the finest in the country now in the forwards category for Madhya Pradesh. And I'm sure in times to come she might just be featuring in the India jersey. Never know. So been a good talent scouting from Madhya Pradesh, from where she has come up the ranks. Madhya Pradesh, as I mentioned about ranks, they are trying to come up to the numbers, trying to give a lovely assist. But Nitu Kumari says, I do see that it has not come at a good angle, and it tells where it was not to be for Orissa, because Madhya Pradesh have now got a penalty corner advantage. As I was talking about Keshar Babar, I'll be talking about little later. But here is Madhya Pradesh trying to get. So injection will be done by Sudeep Takindo. So how kindly she can now get a good injection done, and then the track flicker does the rest of the business. We'll be seeing here 7.5 minutes remaining, and the filling of the half time. Will she attempt the top of hog straight into the line? Panito Kumari says, hang on. I still have the signal of a penalty corner. Madhya Pradesh still survive. A bit of a scar there. And they say, let's get it moving. Let's make it a revolt. And I believe that's Sudipta Kindo. Yeah, she's there with the injection. It all ends up. It's been a nice look and feel. Stops it. Tries a nice reverse back pass. Oh, needed two of them to get their deflection. A cry from Madhya Pradesh. Keshar Babar was the one to first point out for Nitu Kumari, but she says it's all okay. It's a lovely pass diagonal towards the left lane, circle entry. As she was passing along Madhya Pradesh, I think that's Gitasri Nammi, or it's Balmika Ruli, I believe, with the ball, who just got into an important segment where if the ball would have passed by, it had gone to the center attacker and might have just gotten into the jaws of the goalpost. Zigzag fashion from Orissa. Lovely work in the defense from Madhya Pradesh. But look at what Miss Sonal is saying. The umpire, on the other hand, had to signal. She says, if Neetu Kumari has done at the other end, this is my time to signal a penalty corner.
but this time favoring Orissa. Oh my goodness, what a game. 6.5 minutes remaining, yet to open at 0-0 for both the teams. Still in search to get the upper hand from both the girls. As the heat is rising up, the temperature is also rising up with the stick and the ball in this very first important semi-final. All ready for injection. Blow, the whistle is gone. Injection stops, drags, but the ball, gets into the corner. Doesn't even come remotely across close to anywhere toward the goal post. Stops in nice angular pass, trying to dodge it between two of the defenses of Madhya Pradesh. Cannot get it. There is Ruli Balmiki and I believe Gita Srinami also somewhere. Haven't seen Norshan Nas for some time. Who's there with the ball? It's so much on the back. I believe that's Keshav Babar who was there with the ball. Now in the shadows for a while. Yeah, that is Keshav Babar, jersey number 4. When such an important player scored the third goal in that quarterfinal win, 5-1 versus Mizoram. Keshav Babar, just one goal in this tournament. But it's all about the gameplay, isn't it? What a quarterfinal. 5 goals, out of which 3 were scored by Norshan Naz. What a player. As I mentioned before, she's the 6th child out of the nine children in that family. So outstanding from the parents. If the parents are listening, wonderfully done. Congratulations. So I'd request Madhya Pradesh, if whoever is listening, kindly convey heartfelt congratulations to the family. If we're allowed, sometimes it becomes very bad for the parents to even selectively go and allow girls to go on and say, yep, this is one for them to go and enjoy. It's all about how passionately you go and play the game, and you make your not only your state, your district, or your zones, but your country proud. And she is one of those coming up the ranks for Madhya Pradesh. Try to get the deflection correct. Yes, over the crossbar. Ritu Kumar says going to have to play in the straight lineup. Bit of a foul entry there. Madhya Pradesh, can they see the number trying to hammer the shot from right away off the 23-meter circle? 4.5 minutes remaining. The hit is now going few decibels more up because the second half is going to be something they'll have to shout after, because it's both 0-0, and the team who gets the first goal will seriously eye probably an entry into the semi-finals, in the finals, beg your pardon, because this is a semi-final going on. And you can feel the heat coming in from me also, getting very anxious, because two good teams, great teams, are competing in the semi-final, Orissa and Madhya Pradesh. And then there will be the home girls, Jharkhand, to play versus Uttar Pradesh. That also will be a very good game. Orissa hammers the shot. Tomahawk attempted and gets the first goal for Orissa. Hockey Association of Orissa 1, Madhya Pradesh 0. What a climbing of the shot. What a tomahawk from the right flank. It was not very hard, not very sturdy, but good enough to get the assist and a deflection right at the center of the jaws of the goalpost and straight in to get the first goal. There you go. Hammers it absolutely strongly, and then right at the corner extends, and it's jersey number 12 from Orissa, Priyanka Minj, who gets an important deflection, and it is goal overall number 5, and the third field goal for Priyanka Minj. An outstanding player. Amazing. Orissa 1, Madhya Pradesh 0. Anyone know? You've seen scorelines remaining at 1-0. I don't want to be commented as curse. I don't want to say that you're not getting more goals, but you never know. This is how the proceedings keeps on moving, and we have seen it. They might be saying we might not be scoring more goals, but unless we are trying to get into the final segment, one goal might just be enough. And this is where Madhya Pradesh now need to pull up the socks more, than need to pull up every single muscles in their body to come up to the terms and say that we need the goal. We need to make it 1-1 to make it even Stevens. So let's see what is there here. 180 seconds exactly remaining now for
they whistle to move up and to say that it will be half time. What is there in the blue and the black army from Madhya Pradesh? Can they answer it? Can they answer Orissa? Can they make it a small little setback as they get into the shadows of the dugout and trying to spoon this ball now from the corner? That's an advantage for Madhya Pradesh, but it's very slight of an advantage for the goals. Let's see. It's a nice confidence bring. It's a long pass. It really right behind gets in the wrong stick of Madhya Pradesh, who again gets a nice fine onto number 7, onto Sudip Takindo. Sudip Takindo trying to make it to Keshar Bauer right at the corner. If I believe that Keshar Bauer has to be cry for a foul play, Ms. Neetu Kumari, the umpire, acknowledges and says you need to go to the center and play. And that's where it will be. 120 seconds remaining in the second quarter. Ball this goes from the blade of Saroj Mansi on behind, gets into the blade of Orissa. And that's number 10. That's Khushbu Kuzur. The captain is Rubina Bakhla for Orissa. The captain is Salinish Singh from Hockey Madhya Pradesh. And there is a penalty corner as I talk by. Oh, Madhya Pradesh captain might have just parked up the emotions for umpire Ms. Neetu Kumari to signal a PC. Is this the moment? Let's see. If they go it will be euphoric. And then it will be good to see the coach, Devkinandan Kushwaha, is from Madhya Pradesh. What must be going through his mind? I'm sure there are ample questions of what the girls are doing. And this is like against, of course, Mr. Peter Soring from Hockey Association Orissa. He'll be a little satisfied, not be entirely happy. But again, both the counters know that it was not going to be easy. Anyways, 1 for Orissa, 0 for Madhya Pradesh. Let's see. Injection has been done. It's all for the penalty corner. Try to hammer it from the right flank. Good tomahawk attempted. Madhya Pradesh still in the picture. Neetu Kumari says it took the angle, reached a proportion of that leg above. So penalty corner for Madhya Pradesh is done and dusted. It was not a good one. It was not simplified too well. Right from the right flank, and attempt surely did come in, but not hurriedly enough. Well done, Orissa, and your defenses. 3 in the front, 2 in the back. It was all searching for an answer. As Archana Kuzu, 3 goals in her name from Orissa. Beg your pardon, Sudita Kindo from Hockey Madhya Pradesh. I actually mix it up with number 7, Archana Kuzu. She's been such an important player in the 1 penalty corner and 2 field goals for her in the tournament. Also keep an eye on Princess Priya Ekka. She'll be such an important ranger. And do I talk about a range? It's from the left hand, right at the center. Hockey Madhya Pradesh. Oh, could have been 1-1. What a thunderous attempt it was from the center of the striking circle. Oohs and ahs as the ball just flew toward the corner. With 25 seconds remaining, it could have been 1-1. Orissa knows now. These girls are going to come back with some answer. They're already would have been answered, and it would have been lying just with heads down. The hooter has been signaled. End of second quarter, and it's halftime as we take a 10-minute breather. This is Mayur Barwa. Let's see what happens. The focus is on the umpires, Ms. Neetu Kumari and Ms. Sonali Singh. These shakes their hands, and Ms. Sonu brings a bottle of water, says this, rehydrate yourself because the next 2 quarters are going to be huge. We'll be back with the second half. All those action will be coming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. So stay tuned.
And we're all set for the second half as Miss Sonali Singh just kicks it off, saying that, yep, let's all get it moving. At the moment, it's Orissa who is at 1 goals to none. The sides will be changed from the right to the left. It will be Hockey Madhya Pradesh who will be attacking. From the right to the left, it will be Hockey Association of Orissa. Let's see what happens here. To roll the stick by, striking circle entry has been done. Orissa are doing probably a touch little better job here now as they are 1 goal ahead. Then motivation definitely sparks on to do you for make you to do much better. You're watching the live action of the first semi-final between Orissa and the Madhya Pradesh girls of the 16th edition of the Hockey India Sub-Junior Women National Championship 2026. As Orissa trying to rise on the ball, flick the ball fine, gets into the wrong order of Sneha Davri, I believe, who slams the shot in a nice line. Good cross, gets on the ball. Yes, Madhya Pradesh. Oh, it's just trying to pass it on to the center, trying to pass it probably to Keshar Bhaber. Was nowhere in the picture. The ball just rolled by. She knew she had to let go of the ball quickly. But in pursuit of trying to do it a little quickly, the ball went haywire. Scoreline remains at 1 for Orissa, none for Madhya Pradesh. Trying to hammer that shot. On the striking circular defense of Madhya Pradesh has come to the conquering 4. They don't want it. If there's one more goal coming here from Orissa, it might be trouble dialing for Madhya Pradesh girls. Behind the mic, I am Mayur Barwa, carrying through the paces, live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. Past the center line, Madhya Pradesh. She is a solo runner with the hockey ball curving, twisting, making 360 angle is Keshar Bhaber. She's still there. Tomahawk attempted, but straight into the stick of Orissa. And she is injured also. Probably she got on the back. She's lying flat. Just hope she's okay. Unintentional slapping of the stick on the stomach. Good to see she's still standing up, but she can feel it on the back. Oh, she's Keshar Bhaber. Keshar Bhaber almost. She's pleading along with umpire Sonali Singh. She's still there. It's been not a nice show at the moment. But this is where the ball will roll by. The game moves on. 12 minutes remaining. It's a good now attendance with the ball for Orissa. The pace is there. The movement is there. Seems like that's Nikita Barla with the ball trying to play a cat and mouse game along with the players of Madhya Pradesh getting into the center forward position. A good attacking hockey from Orissa. Again with the ball, trying to slide past, goes back, trying to dribble the ball, trying to tackle the questions which comes from Madhya Pradesh. Good to see again the pink, white, and blue of Orissa trying to see if there is any inroad for the ball to pass and get all the way towards the goal, and then it will be 2-0, and that will be huge pressure because this is quarter number 3 of the semi-final. Nice straight line. All moves again, trickles it. Madhya Pradesh still struggling to get some portion of the stick on the ball. It's trying to make it a zigzag fashion. Getting a nice movement of the ball was Nausi Naz. At a long time do I see Nausi Naz there. Or is it Priyanshi Hetre? Tries to hammer it way outside from the 23-meter line. And the ball goes out of bounds. Some piece now. You can see that is Saraswati Oram with the ball at the straight line between 4 of the defenses of Madhya Pradesh. Line has not been too accurate. As umpire Miss Neetu Kumari signals for the play to move on
way outside from the striking circle to carry on the paces. That's Kesha Barber again with the ball and to move and try to angle pace it more. Doesn't get it. Now it's important. Well done, Risa. Absolutely well done to hold the progress with the stick and the ball. 10 minutes now remaining. The cross is good. The line is good. And the penalty corner has come in for Madhya Pradesh. Hmm. A timeout has also been signaled by Miss Sonali Singh. Trying to ask a question there is Urisa. That's number 11. That's the captain herself, Rubina Bakla from Hockey Association of Orissa, who's raising a question. But penalty corner stays for Madhya Pradesh. Let's see who will be there in the injection for Madhya Pradesh. Couldn't figure it out cleanly. Is it the captain, Shalini Singh, who's. No, it's the other one. Let's see the back. Sudip Takindo, it seems, with the injection already. Let's see how the movement now goes from here on. For the girls already with some buttered bread. It's a lovely pass. The usher is good enough. Usher comes in quickly. Another penalty corner goes in vain for Madhya Pradesh. Absolutely well done from Orissa. Score remains at 1-0. I to have slapped the shot between the striking circle and the 23-meter dotted line from the left flank was Madhya Pradesh. Trying to move with the ball, agonizingly keeps on getting very close towards the hard line from Madhya Pradesh. But the result is still far away. Yet to open the scoreline is Madhya Pradesh girls in this all-important semi-final at quarter number 3 with single digits minutes now remaining. Remember, less than 10 minutes to go by the clock. The timer is getting cruel on Madhya Pradesh. As Orissa says, we just need one more goal to put the pressure double and to make it more and more tougher on the girls. But penalty corner comes to the rescue. Probably a very important rescue for Madhya Pradesh. The game is still very much burning. No flames has been extinguished. Madhya Pradesh still see a hope being tightly onto them. Can they pin the hope? Can they make it 1-1? Will be a huge question now. Top of the question mark. Slides the ball, passing it back to number 7. Number 7 trying to get a good deflection near the umpire. That was towards Sudipta Kindo. Risa does magnificently well to get the ball in their own stride. A cry for a foul play from Madhya Pradesh, but it has not been given. Timeout being signaled. The clock has been stopped at 8.5. And to call up the captain now. Captain from Risa is Rubina Bakhla. Both the captains has been called in, including Salini Singh from Madhya Pradesh. Something has comes in from Sonali Singh. Scoreline at 1-0. Do you know how easy or how tough it always beckons? It can be very raw. Can be seriously very raw. They're all very good. And if you can use it to your own proceedings at the corner, it's Madhya Pradesh. The fate is still being asked. Where does it all help? Does it go in a positive way for them? They'll have to keep on getting it. They'll have to keep the points so much alive at this screen this time. This is the area where Madhya Pradesh are actually defending. So don't get excited if the fans are probably trying to hoot it for the ball to get in.
Still past the center line. The ball rolls along quickly to take the shadows very much into the picture. All comes back into the stick for Madhya Pradesh. Still trying to claim a goal for themselves. Brilliant, brilliant game. I would still say, as both are just trying to make the things work perfectly. Orissa still on the top of the game. The chances for Madhya Pradesh in terms of penalty corners have also not come much to the rescue for them, which will be such an important talking point for them, as I'm sure they'll be getting into that 2 minutes of the break. And after that, it will be the last 15 minutes of this semi final. Going to pass the line in there. Conceded, seems like Kuzbu Kuzur with the ball. Now back past the center line. Ably stopped there from Rubina Bakla, the captain. Nice position for Orissa to receive the ball. And keeps it there at the other corner. Not a huge mistake they can do into Sajida Begum. Beg your pardon, on to Rubina Fakla, I would say. Now it's been well received. The research, some good long passes on to Archana Kuzur. 3 goals to her name in this tournament. 5 goals for Priyanka Minch, including the one and only goal which has been scored until now. Small bit of an aerial scoop coming, but Keshar Babar from Madhya Pradesh steals the ball at a very important point. Cry for a small bit of a foul comes in. You can see the inroads much enough here. Can just get on moving. An important portion. In fact, that was Rubina Bakla. That is an important part that I see. Madhya Pradesh not trying the ball. Keshar Babar was at the center of attraction for the ball to put it through. I was believing that was Priyanka Minch, but I just checked the official score. It says Rubina Bakla, the captain, actually, who scored the goal, the first one. So that's actually the first goal for the captain Rubina Bakla in the tournament. 5 minutes remaining, 300 seconds remaining. Will she? Every pronunciation, adverbs, and nouns will be coming for, but eventually she cannot as the ball gains the speed and goes out of bounds. They won't mind a bit. Orissa trying to put the stick on, trying to make the move going. As I talk about strengths of Madhya Pradesh, let's take the name of Mr. Vijay Vignesh again, the strength and conditioning coach of Madhya Pradesh girls. He's a tall, astute figure and comes from a family of sports. Vijay Vignesh, always a smiling gentleman, a smiling personality, always good to talk to. Mr. Vijay Vignesh. I'm sure he'll be smiling as he hears his name live. But all the fours, it's like a trip. It's like a 4 times Nelson. 4.44. That's where the clock has been stopped now for waiting for the penalty injection to come up from Madhya Pradesh. Can they make it 1-1? Stops, gives it back to Keshar Babar. Was it actually on to Sudipta Kindo, because Keshar Babar is sporting 4. And trying to get it back. Sudipta Kindo again will be heading in for the injection. Salini Singh, the captain, receives, or it is for the drag flicker. It is coming, how corner it is. Oh my lord, for Madhya Pradesh from the center. She had all the time in the world, I believe, as she was coming nicely, as if a cheetah was coming out from the raw grasses of a jungle and trying to prey. And on the prey, but it was not to be. Poof, Lady Luck has seriously gone for lunch break. 4 minutes, 240 seconds. The feeds will suddenly get to a cold sentiments of the girls of Madhya Pradesh, because these are under 17. Still not getting into the legal formalities of being called women. They're still girls at the moment. As you can see, one more troop of players coming from the corner, and believe one of them should be the home team, probably Jharkhand or
Uttar Pradesh gets into the foot of Sneha Davre of Madhya Pradesh, jersey number 10. He was limping, might be having a rolling substitution, but the game moves on. With the ball is Balmiki Ruli of Madhya Pradesh, and behind her, trying to receive at a different angle, was Hitashi Nami, I believe, trying to make a good crisscross angle from Orissa, trying to get that ball moving. And that was from the blade of Sweetie Kuzura, very important cog in the wheel for Hockey Association of Orissa. Beg your pardon. And now it's Sudipta Kindo again. No goals for Sudipta Kindo in this championship. As you can see, that is Gitashree Nami. She has 2 goals. Gitashree Nami, including the first goal she scored in the quarterfinal versus Mizoram. And umpire Miss Nitu Kumari signals a penalty corner. It's for Madhya Pradesh. How many times they get it? Is this now the chance for them to make a comeback? See, can they make that important move? They'll have to get it going. They've been trying, there's not been coming into their own facets. This might be an important one for them to try and convert this one. Is it there? Is it there for them? Good. 2 behind in the defense is more like the ushers coming in to stop the ball. It's more like asking the how's the job going in your office, and then say okay, we're not having a good time. Because the manager is right on the top here. The manager is Orissa for Madhya Pradesh. A tough day at the office at the moment for Madhya Pradesh girls. But again, you don't know what's lying or lurking in the flip side for them. The story is not finished at the moment, as it's 12 minutes past 3 o'clock in the afternoon. Hall can be signaled very fine, trying to pass the ball. A nice angle, straight cross for Madhya Pradesh. Keshav Babar with the ball, well spoiled and stolen by Orissa as such an important juncture. Past the center line there. Again, giving it back to Orissa at number 8 for Soni Magor with the ball. Trying to flip it, Soni Magor again for Orissa. It's a nice small pass, nice rotation. Now giving it to Kiran Ekka. Kiran Ekka has 1 penalty corner in the quarterfinal match of 8-1 versus Maharashtra. One of the players from Madhya Pradesh now falls down. She got a stick. We'll have to look at the replay of where she got the stick there. Look at the replay. Onto the blades of Kiran Ekka. And okay, trying to twist and turn with the ball. Moves a little bit ahead as he hammers the ball. Oh, it got actually straight into the head of the player, who immediately lets go of the stick. Doesn't get easy. Just hope she's okay. As Miss Nitu Kumari checks on to her, just hope she's doing okay. And I'm sure she needs to go and check for herself. Never should take it lightly, especially when it's hitting your brain. It's important. It's like the CPU of your whole body. I'm sure she'll be nursed. Her injury, and I hope she's doing all okay as she's standing up and focusing on the game. Just 40 seconds remaining. Look at the time. Look at the seconds time. How quickly it goes, as if a meteorite is going to hit one of the planets from somewhere. So your heartbeat just keeps on racing. But after this, just 15 minutes will be remaining for the match to end, for the semi-final number 1 to end, and 2 minutes of break will be available only for them to gulp in the energy, talk to their coaches, try and see what difference can be done there.
It'll be more for Madhya Pradesh and for the coach of Orissa, Mr. Peter Sorry. It's all about to saying that just play your natural game. Don't get unperturbed of what might be coming in because the girls from Madhya Pradesh are seriously going to come back harder. Blow off the hooter to signal quarter number 3 to come to an end. It still remains the same in the score line as Ms. Nitu Kumari picks up the ball and will be heading straight to join her counterpart, Ms. Sonali Singh. 1 for Hockey Association of Orissa, 0 for Madhya Pradesh. We'll be back with 1.5 minutes for the start of the last quarter of the first semi-final. This is Mayur Barwa. I'll be back in less than 100 seconds for all those action to be unfolded live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. Stay tuned. And we're back for the last 15 minutes of this first semi final of the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. Coming to you live from the Marangom Ke Jaipal Singh AstroTurf Stadium here in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. Live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India with the mic for the last quarter of this tournament and probably the last time I'll be joining in this championship. This is me, Mayur Barwa. And for the next fragment, it will be Mr. Shami Malam for the last match of the second semi-final between Jharkhand and Uttar Pradesh, which is going to be after this. And then we're having a rest day tomorrow, and then day after tomorrow, the hard liner in the morning, and then evening 4 o'clock will be the grand finale of this tournament. Let's see which of the girls now ages the name. Will it be Orissa, Madhya Pradesh? Will it be Jharkhand and Uttar Pradesh to lock horns on the final day, day after tomorrow on a Sunday, the 12th of April? So block your calendars, keep those alarm clocks going on. Don't miss an action as this sub junior girls under 17 category. They just move up to cement the names. I'm sure many of them will be going into the senior category. We've already earmarked some really good names coming up in this tournament. And this is really nice. Thank you so much, production team, for flashing my name, taking responsibilities in commentary. This is me, Mayur Barwa. Loving it, the contest, I'm sure. And I just hope that I've been able to do my duties diligently and that you have loved the commentary. So leave your feedback on the chats. I love to see what is there for everyone. As the ball goes jig-jack right at the hard line. Touch less than 13 minutes remaining. Tomahawk attempt and Madhya Pradesh gets the goal. Makes it 1-1. As I was saying, there needs to be a feedback. Here comes the feed on the front from Madhya Pradesh. Receives the ball, an absolute tomahawk. Oh, goalkeeper nowhere. And it is, I believe, Gitasri. Yep, Gitasri Nammi from Madhya Pradesh who gets the goal. And to make it 1-1 in the last quarter of the first semi-final. It has come alive now. The first semi-final. Oh, pressure now back on Orissa.
What a game, specially done. Oh, something for the goalkeeper, Nita Maji, numero uno. She was ahead, she was going to the corner, few steps ahead, and then came the hard tomahawk, just slamming of energy, and absolutely smoked it for the first goal. One for Risa, one for Madhya Pradesh, and we are back on track and making it even Stevens. Here's Madhya Pradesh now getting one more. Orissa now knows when they're getting one, they might just be allowing the opposition to get one more goal, which is nothing to be exactly 12 minutes. 12 minutes, girls. 720 seconds to go by for the final hooter. None of the goalkeepers wants the penalty shootout. One of them will be keeping the fingers crossed, saying that kindly get a goal. Let's get it done and dusted within those 12 minutes. As the aerial scoop comes in, goes out of bounds. Some umpire, Miss Nitu Kumari, whistles it up for the ball to be rolled back into the stick for Madhya Pradesh. What a good game this is! Absolute turnaround. This is called the magic of the semifinals. As Keshav Bhavar with the ball, trying to roll the ball, defense corridors three behind from Orissa, forming a right corridor of energy. And as it goes to Nausi Nas, she has three goals in that quarter final, including a penalty corner. No goals at the moment for her in this rotation number. Let's see. We can now get it moving. Talking about goals column. And it is Norshin now is number 5. I actually thought it came from Gita Nami. So officially I was just checking. So Rubina Bakhla, the captain for Orissa, and then Norshin Naz, who actually scored a goal. So this is now goal number 9 in total for Norshin Naz. What a player. So another field goal has come in from Norshin Naz to open up the account for Madhya Pradesh. Outstanding player. Jersey number 5. Remember the name as we keep on mentioning. 10 minutes now going on from here on. 600 seconds counting for the girls. Ball says rolls by. Miss Neetu Kumari lifts her hands, says, let the ball moving, let it keep on rolling, let's not waste any time, or let the energy not burn any extra calories which is not needed. Ball goes out of bounds. The shadows from the administrative block gets heavier from the corner. But whatever it is, even if it's darkness, we'll be using a net, we're using the artificial lights. We don't want any of those filaments to be going out of the same final because it is very much alive at 1-1 and 9.5 minutes remaining. These girls will try to upspring their movement. As you can see, Risa is making the ball go out. It was from Kiran Ekka from the blade. Now Keshav Bhabar with the ball, trying to go past the, as everyone can hear the, oh my goodness, a green card. A green card has been shown by Miss Nitu Kumari, and I believe that's Keshav Bhabar. What an important passage of play there. You can see Keshav Bhabar, number 4 of Madhya Pradesh, now running. It's a 2-minute suspension for her. Will it make a different turnaround for them? So green card is 2-minute suspension. Yellow card is a 5-minute suspension, which is absolutely huge. Nitu Kumari held up 3 green cards, including a yellow card in the first quarter final, which was between Orissa versus Maharashtra. Anyways, that's for the match officials to decide and keep on officiating to ensure the smoothness of the game and to ensure that the spirit of the game is held alive, which is so much required. There is a game going on, but you need to play accordance to what the rules of the game simplifies for yourself as an athlete, to building yourself as a good human being. In hockey, it's no different. 8 minutes to go by and this match to finish and the final hooter to be blown in. I'm sure they're experiencing a goal fit moment. All of the girls that you see on a picture, minus
Kesher Babar, I'm sure she'll be joining in very quickly after the 2 minute suspension, warming the bench at the moment. Reserve umpires Miss Sonu. Oh, she falls down, quickly taking it out of the context with the ball. I believe that was Gitashree Nami now trying to break it between three of the corridor. Comes in quickly from Risa, past the center line into center forward mid region. It's a nice reverse long angle, getting into the stick of Risa. It's a huge it's a huge area, I believe. It has allowed Princess Priya Ekka to get into the zone, but well done again from Madhya Pradesh. And with a stick, moving it very quickly is Noshian Naz. You see, Noshian Naz gives it a back flick pass to Gitashree Nami. Sun is very hard on the back of the jersey. Sometimes it makes really tough to see. That was number 9. That was Priyansi Khetri on the stick on the memp, and as she slaps the ball, gets right to the corner of Madhya Pradesh. You can see it slams in a long angle, but gets into the stick of Sweetie Kuzur with a deflection, gets out of bounds, but the ball comes into play again. What do we hail here? Risa getting onto the ball, trying to usher in the much needed energy. Madhya Pradesh says no, will steal the ball, and now slams it past the center line, gets it to the stick of Orissa, who sends it out of bounds. 360 seconds now remaining here. 5 minutes. Princess Priya Eka with the ball for a brief moment against Norshin Naz. Norshin Naz jersey number 5. Princess Priya Eka is also jersey number 5. So both are such and such an important component of their respective teams for Orissa and Madhya Pradesh. For Madhya Pradesh and Orissa, if you have to say, because Noshan Naz is from Madhya Pradesh, Princess Priya Eka is from Orissa. I'm sure there have been so many of supporters who must have tuned in to this final segments. 333 seconds. 333. That's big. 6 seconds just goes by very quickly. There's the movement of the ball going. It will only say in directions probably where it doesn't want to be. It's all about how you use a wrist action, how you can get with the ball. Madhya Pradesh trying to steal the energy. And it's on Saroj Mansi to the dotted line. Orissa comes in easily again. And Madhya Pradesh are trying to get it inside the striking circle, right between the 23-meter striker. And strikes, hammers the shot into the goalpost. Madhya Pradesh gets goal number 2 from being 0-1 to 1-1 and now into 2-1. But still, a question has been asked by Orissa. As Miss Sonali Singh says, it's a timeout and probably will be going for a video referral. What a behind assist, I would say. Look at how she twists the ball and get right between this aerial movement, and now there is a hammering of a shot, gets right into the corner. Oh, that is number 7. That is Sudipta Kindo, and gets a hug, gets a nice beer hug. As all the three also comes in to join in the celebration. But behind, you can see there is a signal for a timeout. As it get into a nice energy line, less than 5 minutes now remaining. Let's see where the infringement has occurred, for it was not called it to be. It is just here it is. There is a stick on, as they've been trying to stop the ball. Is it coming to a much needed portion there? We're still waiting for the the replies coming in from the technology as we look another fraction of that replay. Madhya Pradesh, what a comeback! Absolutely remarkable. I think this is where they are probably questioning in before. Sudipta Kindo got hold of the ball and put a nice angle onto the ball. That's Miss Sonali Singh waiting to get an answer. Orissa 1, Madhya Pradesh 1.
It is well saved. So it will not be a second goal. What a brilliant review this is from Urisa. The score now goes back to 1-1. It's not a goal. It's a brilliant, brilliant review from Urisa. All celebrations will now die out, but focus back on the next 4.5 minutes. What a remarkable turnaround. Seriously, what a game in the first semi-final between Orissa and Madhya Pradesh. Trying to push a break. And sometime the second semi-final will be starting, I'm sure, with some elated hearts, with some different dimensional of sports in the hearts are Jharkhand and Uttar Pradesh looking at this game very minutely and closely. Striking circle entry, a cry for a foul play. What does Miss Nitu Kumari says here? She says it's a penalty corner, or what it is. Yeah, it's a penalty corner being given to Orissa. Oh yes. How much of them it will come into a final line here will be like question to upheaval. Moment is good. The line of where it needs to be passed into a trajectory also seems to be all okay. As you see Orissa's number 18 there, it's Sonima Gaur who is with the ball, trying to make those final lines work for here. What does the luck say? I just hope the Lady Luck has finished her lunch, is now right up here at this Marangom Ke Jaipal Singh Astrota venue, watching over the proceedings of this last 2.5 minutes. There you go. Injection has been done. Stops. Rack flick was not there. Madhya Pradesh does superbly well to make this ball move absolutely away. And a face mask also comes out of Madhya Pradesh girls. Two of them collides. The ball chooses to go out of bounds. Says I'll also have to look out from where it needs to go. Absolutely good game. Is there a green card? There is a green card. I believe that's number 70. That's Kiran Ekka now is running to warm the benches for 2 minutes. Initially, it was Keshar Bhabar from Madhya Pradesh for 2 minute suspension from umpire Neetu Kumari. And now she's becoming a green card giving specialist. She will be angry for me to saying that. But that's what the match officials are for, isn't it? All of them have done seriously, wonderfully well as match officials in this championship. Less than 3 minutes for the final hooter to be blown. If it remains at 1-1, then you know what it is. Penalty shootout will be coming out. If was that goal not given, that would have been a momentous savior for Madhya Pradesh in a straight territory. Let's see what happens. It's a nice trickle by Madhya Pradesh with the ball clinging on. It should be a goal. It is a goal. Brilliantly done. And it's Keshar Bhabar from Madhya Pradesh who gets the goal. Wonderfully done. It is absolutely brilliant. What a lovely assist. Great teamwork. Lovely reflexes of the angle, twisting and giving a nice back flick. Receiving angle at the corner of the striking circle. She backtracks, she dribbles the ball, gives to the center attacker who just smokes the goal in an euphoric manner. It's Keshar Bhabar with the goal. With less than 2.5 minutes remaining, there is a rejoicement which is coming in for the girls of Madhya Pradesh who are now 1 goal leading in this last quarter. Wonderfully done. Let's see if Orissa can answer it. Twisting and turning, jagging it through. Can they scoop it? It is scooping it. Can they get it goal? Oh no, the whistle has been blown. It will not be 2-2. What a goal formation. This is moving on. Just less than 2 minutes remaining here. Madhya Pradesh. Can they get it? We did see a celebration at the corner of that dugout. They were all dancing in the aisles. But now Orissa might just say no, it's not ended. It's still 100 seconds remaining. Trying to hit the stroke, getting into the legs. Let's see what happens here. 2 for Madhya Pradesh, 1 for Orissa. Just about 1 goal to make it fair and square at 2-2.
It's 2 homecoming at the moment. It's still going by. It's time is trickling by. It's a huge essence now as we're waiting for the final hooter to be blown in. It's going to be something. It's a place about the final of the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship. We're waiting for the finest of the finer angles to come up and say, this is here. This is we are where we are meaning it to be. This might just be one of those moments just so leading by. Can the moments and the memories remain forever for them to seal? Let's see, just 30 seconds now remaining. Does Urisa have the whimper of energy? Oh, penalty corner! Penalty corner has been given by Miss Sonali Singh. The umpire says, I can see a push. I do see a push. The clock has been stopped at 27 seconds. What a different dimension to this game now it is. As Orissa is 1, Madhya Pradesh 2. There's a goal coming here, and it will be fair. And in all honesty, it will be the last nail in the coffin for them to get a name in the final. There is now injection has been done, has been drag flicked, but the ball will go out of bounds. Just 18 seconds now remaining. It is such a moment to remember. Just 10 seconds now remaining. Orissa. Oh, 9 seconds now. It is now remaining ahead. Couldn't see it too clearly of exactly what it is. Thus they say it's now going on. All waiting with those bated breaths to know and understand of where it is going. Waiting for the whistle to come up. Just 9 seconds remaining. Just 7 seconds to go on for the final hooter to be blown. And to say that Madhya Pradesh will be moving ahead into the final. There we go. Look at those scenes. It is first the goalkeeper who goes ahead with the celebration, and the army of blue and black joins in the celebration, as it's the Hockey Madhya Pradesh who get into the final of the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. Commiserations for Hockey Association of Orissa. Who would have believed this turnaround from being 0-1 to make it 1-1 and then to win by 2-1? This is absolutely stupendous and a magnificent comeback for Madhya Pradesh and get the name in the final, which will be played on Sunday, the 12th of April. This is seriously enormous. And now the focus will be shifting on to semi-final number 2, which is going to be between the home girls, Jharkhand, to play versus Uttar Pradesh in some time. What scenes. I'm sure I need to go and grab a ECC machine. And why not? They also needs it. Euphoric scenes at the Marangom K. Jaipal Singh AstroTurf Stadium here in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand, as the girls from Orissa have really named themselves and have done it magnificently well. 1 for Orissa, 2 for Madhya Pradesh, and it's for them to get into the pictures as the water comes gushing out. It's almost like they're saying, this is a guard of honor. It's a standing honor for you. We're getting into the second semi-final. This is Mayur signing off. We'll be seeing and meeting you very soon. Take care of yourself. Join me very soon, 4 o'clock.
नमस्कार, आदाब। झारखंड की राजधानी रांची के मरंग गोम के जयपाल से मुंडा स्टेडियम से मैं शमी मालूम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल यहां भी होने के लिए जा रहा है। एक तरफ से है झारखंड की टीम तो दूसरी तरफ से है उत्तर प्रदेश हॉकी की टीम। दोनों टीमें आमने सामने और खेल के निर्णायक का इस तरह यहाँ पर इशारा और सीटी बजते से आती है खेल की शुरुआत। अपनी क्षेत्र में इस वक्त खेलती हुई एक टीम है यहाँ पर लाल रंग की जर्सी में और दूसरी टीम नजर आ रही है इस वक्त ब्लू रंग की जर्सी में, नीला रंग की जर्सी में। इसके पहले मैं बता दूं अभी जो खेल हुआ यहाँ पर जो पहला सेमीफाइनल खेला गया उड़ीसा और एमपी के बीच, मध्य प्रदेश के बीच, वहाँ पर परिस्थिति रही एक बहुत ही क्लोज मुकाबला चला यहाँ पर। हालांकि उड़ीसा की टीम ने पहले गोल कर दिया था लेकिन मध्य प्रदेश की टीम उसके बाद वापसी की और वह न सिर्फ वापसी किया बल्कि वापसी करने के बाद बराबरी के बाद एक गोल की बढ़त भी प्राप्त कर लिया और अंततः एक गोल का बढ़त कायम रहा। स्थिति रही 2-1, एमपी 2 और उड़ीसा 1, यानी पहली फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम हो गई है यहाँ पर एमपी की टीम। तो इस वक्त पहला क्वार्टर का खेल शुरू होता हुआ मैं बताऊँ झारखंड की तरफ से खेल रहे हैं। गोलकीपर में खिल्ली कुमारी, जैसे नंबर 2 में नीपुंता कुल्लू, 3 में रोजीना कुल्लू, 4 में पुष्पा माझी, 5 में श्रुति कुमारी, 6 में स्वीटी आइन, 7 में अलमा भेंगड़ा, 8 में है साइया टिकी, 9 में संदीपा कुमारी। ये अभी तक का 4 गोल कर चुकी है संदीपा कुमारी। जैसे नंबर 9 को याद रखिएगा आप। इसके बाद है 10 में शिवानी करगटा, 11 में सुस्मिता गुड़िया, 12 में मरियम भेंगड़ा और 13 में प्रीति बिरून, सुमन सांगा हैं 14 नंबर में, 15 में अंकिता लकड़ा, 16 में नीलम टोपनो, 17 में रीचा मनी, कोच हैं इसके विकास पंत और बालो होरो इसके हैं टीम मैनेजर। जबकि जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की तरफ से खेल रहे हैं गोलकीपर में वर्षा सिंह और जैसे नंबर 2 में आरिका कुमारी, ये अभी तक की 3 गोल कर चुकी हैं। 3 में आद्या यादव, 4 में राशि सिंह, ये भी अभी तक 3 गोल कर चुकी हैं। 5 में है वैशाली सेन, 6 में मानसी सागर, 7 में अंशु कुमारी, 8 में ममता कुमारी, 9 में आकांक्षा मित्रा, 10 में रूबी यादव, 11 में अन्नू पाल, 12 में नैना, 13 में दिव्यांशी सिंह, 14 में दिव्या यादव, 15 में विभा कटियार, 16 में गुरमीता, 17 में है आराधना यादव। इनके टीम मैनेजर हैं अकरम महमूद और टीम मैनेजर है अर्शीफ परवीन सिद्दीकी। तो इस तरह से यहाँ पर आज के दोनों टीमों का, खिलाड़ियों का मैंने आपको परिचय दिया। और मैं बता दूँ स्थिति पहला क्वार्टर का इस वक्त चल रहा है, 0-0 है। बहुत दूर से हिट यहाँ पर लॉन्ग कॉर्नर का, सॉरी यहाँ पर हाँ लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा है इस वक्त। सीधा पास, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर बॉलिंग के आगे बढ़ने की कोशिश है मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए। अगर मैं बात करें गोल की तो मैं बता दूं झारखंड का जो सफ़र अभी तक है सेमीफाइनल तक, पहले मुकाबले में झारखंड ने महाराष्ट्र को 6-0 से पराजित किया। दूसरे मुकाबले में झारखंड ने बिहार को, अपने पड़ोसी राज्य बिहार को 9-0 से बिल्कुल रौंद के रख दिया और क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने पंजाब को 2-0 से पराजित किया। यानी झारखंड की तरफ से अभी तक कुल 17 गोल हो चुका है, जबकि झारखंड के विरुद्ध में एक भी गोल नहीं हुआ। झारखंड का गोल डिफरेंस की अगर बात करें तो है 0, सॉरी यहाँ पर 17+17। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को पहले मुकाबले में 5-1 से पराजित किया। उत्तर प्रदेश ने मिजोरम को दूसरे मुकाबले में 1-0 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को एक बहुत ही क्लोज मुकाबला में 2-1 से पराजित किया। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से गोल हुआ 8, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध में गोल हुआ 6। उत्तर प्रदेश का गोल डिफरेंस है +6। यहाँ पर देखिए खेल के निर्णायक हैं, मैं बता दूं एक तरफ से है खुशप्रीत कौर और दूसरी तरफ से है यहाँ पर शेफाली
शेफाली में बता दूं, ये आती हैं हरियाणा से, जबकि ये आपका खुशप्रीत कौर ये पंजाब से आती है। खुशप्रीत कौर ने इस वक्त मदद मांगी है यहाँ पर वीडियो अंपायर से। नीली रंग की जर्सी में है उत्तर प्रदेश की टीम, लाल रंग की जर्सी में है झारखंड की टीम। लाल रंग खतरे का सूचक कहा जाता है। कितना खतरा आज बनती है यहाँ पर झारखंड की टीम उत्तर प्रदेश के विरुद्ध। लंबा हिट और यहाँ पर गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर, लेकिन इस गोल के ऊपर ऑब्जेक्शन है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का और यहाँ पर इंतजार हो रहा है। मैं बता दूं, वीडियो अंपायर का आज के स्कोरिंग जज हैं सोनाली साहू और जबकि मैं बता दूं टाइमिंग जज हैं ये हैं पिंकी नायक। रिजर्व अंपायर हैं प्रीति माई खुंतिया, ये उत्तर प्रदेश से आती है। ये था खिलाड़ियों का परिचय और इनका ऑफिशियल। मैं बता दूं अंकिता लकड़ा है कप्तान झारखंड के, जबकि यहाँ पर दिव्यांशी सिंह है कप्तान उत्तर प्रदेश की। खेल इस वक्त जबरदस्त होने की संभावना है। दोनों टीमें चिर प्रतिद्वंदित टीमें आमने सामने। एक लंबा इंतजार इस वक्त हो रहा है यहाँ पर। स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं आप खुशप्रीत कौर, बहुत ही तेज तर्रार अंपायर हैं, ये पंजाब से आती हैं। दूसरी तरफ से आए शेफाली छोकड़ और यहाँ पर डिसीजन को बदला गया। तो पहला सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश ने पराजित किया उड़ीसा को 2-1 से, एक बहुत ही क्लोज मुकाबला में। तो यहाँ पर तो पहले क्वार्टर फाइनल का खेल चल रहा है और पहले क्वार्टर का खेल है इस वक्त यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास, मध्य रेखा के पास बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है दोनों टीमों के बीच। एक तरफ से है उन व्यूअर के लिए जिन्होंने अभी अभी स्मार्टफोन के ऊपर खेल देखना शुरू किया होगा। मैं बता दूं नीली रंग की जर्सी में है उत्तर प्रदेश की टीम, जबकि लाल रंग की जर्सी में है झारखंड की टीम। मेजबान झारखंड इस वक्त दूसरा सेमीफाइनल खेलती हुई उत्तर प्रदेश से। हिट मिलता हुआ इस वक्त उत्तर प्रदेश को। लंबा हिट, बहुत बढ़िया पास। उत्तर प्रदेश 3 मुकाबले को खेल करके सेमीफाइनल खेल रही है। दूसरा मुकाबला झारखंड की भी टीम ने अपना तीनों मुकाबले को जीता और जीतने के बाद यहाँ पर दूसरा सेमीफाइनल खेल रही है। वो यूपी के खिलाड़ी के पास से बॉल मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए लेफ्ट फ्लैंक से बहुत तेज कदमों का इस्तेमाल करते हुए यूपी के खिलाड़ी बढ़ रहे हैं इस वक्त स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की तैयारी। और बहुत ये अरिका कुमारी है, अरिका कुमारी से सावधान रहना पड़ेगा। ये अभी तक 3 गोल कर चुकी है अपनी टीम की तरफ से। तो एक बार फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, यूपी के खिलाड़ी ने कब्जे में किया बॉल को, सीधे अच्छा पिच हल्का पास सबने बढ़ा दिया है और गेंद इस वक्त चली आई है अजय यादव के पास। अजय यादव ने लेफ्ट फ्लैंक में बॉल को बढ़ाया था, एक बहुत ही तेज पास बढ़ाने की कोशिश की थी और वहाँ पर पकड़ में आई नहीं। मानसी सागर के लिए गेंद गई बाहर। गोल लाइन का फिट मिलता हुआ यहाँ पर झारखंड को। झारखंड है लाल रंग की जर्सी में, जबकि दूसरी तरफ है आसमानी रंग की जर्सी में है इस वक्त उत्तर प्रदेश की टीम।
आकांक्षा मित्रा है सामने। इस वक्त झारखंड के रक्षापति खिलाड़ी के समंत बल्लेबाजी अपने साथी खिलाड़ी के लिए स्कूप किया गया। यहाँ पर गेंद ऊंची उड़ती हुई गेंद, गेंद बहुत तेज तरीके से निकल गई बाहर। 0-0 की इस वक्त यहाँ पर स्थिति है। पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है। दूसरा सेमीफाइनल आप देख रहे हैं झारखंड के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। मैं बता दूं 1 अप्रैल से ये हॉकी का कारवां चला था यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बता दूं कुल 28 टीमें पहुंची थी, जिसको 3 डिवीजन में बांटा गया था। डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। डिवीजन ए में 12 टीमें थी, डिवीजन बी में 10 टीम और डिवीजन सी में 6 टीम। कुल 28 टीम। त्रिपुरा की टीम नहीं पहुंच पाई थी यहाँ पर। लंबा हिट यहाँ पर झारखंड के लिए मौका, यहाँ पर गई बाहर की स्थिति। यहाँ पर है 0-0। लगभग 8 मिनट का खेल होने को है। झारखंड के खिलाड़ी के पास है बॉल। झारखंड के खिलाड़ी गेंद से छिन गई। यहाँ पर सफलता मिली है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को। सतर्क रहना पड़ेगा झारखंड को भी। उत्तर प्रदेश की भी टीम बहुत ही तेज हॉकी खेलती है इस वक्त। मध्य रेखा से यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचते हुए टॉम हॉक यहाँ पर गेंद चली गई बाहर। झारखंड यहाँ पर दूसरा सेमीफाइनल खेलती हुई, और इस सेमीफाइनल में क्या होती है देखिए। मुकाबला पहला सेमीफाइनल में तो मध्य प्रदेश ने 2-1 से मुकाबला जीत लिया है उड़ीसा से। गेंद इस वक्त आद्या यादव के पास। इस वक्त आद्या यादव ने स्कूप किया बॉल को, ऊंची उड़ती हुई गेंद। अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी का, बॉल को कलेक्ट कर लिया है। डायगोनल पास मध्य रेखा से इस वक्त लेफ्ट हैंड से बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए झारखंड के खिलाड़ी। बहुत बढ़िया पास, बहुत तेज गति से स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रही है। डॉटेड लाइन के बाद यहाँ पर सर्किल के अंदर पहुँचती हुई झारखंड की टीम, लेकिन वहाँ पर रक्षापंथी के खिलाड़ी भी काफ़ी मुस्तैद दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश का। बॉल को खतरे के क्षेत्र से यानी डी बॉक्स से बॉल पे निकाल दिया, बॉल को बाहर किया। झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल, सीधा पास, लंबा हिट, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर इस वक्त एंट्री करने की कोशिश, बॉल को बढ़ाया था लेकिन गेंद निकल गई बाहर। अच्छा पास बढ़ा दिया था यहाँ पर श्रुति कुमारी के लिए। श्रुति कुमारी अभी तक 1 गोल कर चुकी है। लंबा हिट यहाँ पर, अच्छा मौका है, और गेंद गई इस वक्त बाहर। एक तरफ से हैं यहाँ पर खुशप्रीत कौर, दूसरी तरफ से हैं शेफाली। शेफाली आती है हरियाणा से, और एक तरफ खुशप्रीत कौर ये पंजाब से आती है। 2 अंपायर आज के मुकाबले को संचालित कर रही है इस वक्त। एक बार फिर स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर खेल होता हुआ, यूपी के सर्किल के ऊपर खेल होता हुआ। तो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है इस वक्त। टीमें हैं, एक तरफ से झारखंड, मेजबान झारखंड, और दूसरी तरफ से है उत्तर प्रदेश की टीम। लगभग 10 मिनट का खेल होने को है यहाँ पर पहला क्वार्टर का। अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। दोनों टीम 0-0 की स्थिति में है। झारखंड ने जो मुकाबला जो पिछला जीता, धुआंधार खेल खेला था झारखंड ने। महाराष्ट्र को 6-0 से, बिहार को 9-0 से, और पंजाब को 2-0 से क्वार्टर फाइनल में पराजित किया था। झारखंड की तरफ से कुल 17 गोल हुआ है। झारखंड के विरुद्ध में कोई भी गोल नहीं हुआ। ये शानदार रिकॉर्ड है झारखंड का 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। लेकिन आज यहाँ अभी तक रोक के रखा है उत्तर प्रदेश की टीम ने झारखंड को। उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को हराया था 5-1 से। उत्तर प्रदेश ने दूसरे मुकाबले में मिजोरम को बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में 1-0 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में हरियाणा जैसी मजबूत टीम को 2-1 से पराजित किया। उत्तर प्रदेश की तरफ से हुआ कुल 8 गोल, विरुद्ध में हुआ 2 गोल, यानी गोल डिफरेंस है +6। तो यह स्थिति इस वक्त। दूसरा यहाँ आज जो सेमीफाइनल खेला हो रहा है, इस खेल में अभी तक स्थिति 0-0, 4 मिनट का समय बाकी है इस वक्त पहला क्वार्टर का खेल। इसका मतलब जाएगा बहुत ही क्लोज कंटेस्ट में होगा।
अध्यक्ष यादव ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, सर्किल एंट्री करने की कोशिश कर रही है इस वक्त यूपी की टीम। यूपी के लेफ्ट विंगर के पास है बॉल, इस वक्त सर्किल के ऊपर खेल हो रहा है, झारखंड के सर्किल के ऊपर एंट्री करती हुई अच्छा पास बढ़ा दिया है, लेकिन गेंद निकल गई बाहर और गेंद इस वक्त चली आई है संदीपा कुमारी के पास। संदीपा कुमारी मैं बता दूं ये अभी तक 4 गोल कर चुकी है, बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं। संदीपा कुमारी के बाद पुष्पा माझी ने 3 गोल किया है। झारखंड की तरफ से प्रीति बिलू ने किया है 3 गोल। सबसे टॉप स्कोरर है झारखंड की ये संदीपा कुमारी, जर्सी नंबर आप याद रखिएगा 9 को, अभी तक 4 गोल कर चुकी है। लेकिन इस वक्त झारखंड खिलाड़ी के और यूपी के खिलाड़ी के बीच ये द्वंद्व मध्य रेखा से बॉल को बढ़ाते हुए यहाँ पर यूपी के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करने के बाद अच्छा पास बढ़ा दिया है, एक समांतर पास लेफ्ट विंगर को मध्य रेखा से लेकर चल पड़ी है बॉल। इस वक्त यूपी के खिलाड़ी बॉल लेके निकलते हुए नैना वहाँ पर आगे बढ़े थी, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी का अंकिता लकड़ा ने बाय फ्राई में बॉल को बढ़ा दिया है। अंकिता लकड़ा कप्तान है और सर्किल के ऊपर यहाँ पर 23 मीटर रेखा के पास बढ़ाया था झारखंड के खिलाड़ी ने। फ्रीट मिलता हुआ इस वक्त झारखंड को 23 मीटर रेखा के पास पीछे बढ़ा दिया। एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी के पास है बॉल, लंबा हिट लगाने की कोशिश और बॉल को संभाल लिया झारखंड के खिलाड़ी ने। बहुत तेज हिट यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, तेज मौका, लेकिन गेंद गई बाहर। 0-0 की स्थिति है, बहुत ही तेज हॉकी चल रहा है। झारखंड एक बहुत ही हॉकी यहाँ पर खास करके झारखंड की अगर बात करें तो हॉकी का यहाँ बहुत क्रेज है। झारखंड की रांची डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा की अगर बात करें तो हॉकी का नर्सरी कहा जाता है। गुमला में आपको हॉकी देखने को मिलेगा, रांची में हॉकी देखने को मिलेगा, किसी भी गांव में चले जाइए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के बाद भी बच्चे और बच्चियाँ बांस की टहनी से हॉकी नमा स्टिक बना के खेलते हैं। हॉकी यहाँ के लोगों के दिल में बसता है। खासकर 3-4 जो हम जिले के नाम बता रहे थे आपको, गुमला, रांची, सिमडेगा, खूंटी, इन जगहों में बहुत क्रेज है हॉकी का। तो और यही कारण है कि हमेशा कुछ दिनों से झारखंड की लड़कियां प्रतिनिधित्व किया है अपने देश के लिए। और अभी तो जो झारखंड जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उनकी कमान भी है झारखंड की सलीमा टेटे के पास। सलीमा टेटे इस वक्त कप्तान है भारतीय महिला हॉकी टीम का। सिमडेगा से की रहने वाली हैं, यहाँ से लगभग रांची से 120 किलोमीटर दूर सिमडेगा के बड़की छापर की रहने वाली है। एक अच्छा मौका यहाँ पर टॉम हॉक इस वक्त लगाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बहुत ही तेज बॉल लेके निकाल, ममता कुमारी बॉल लेके निकल रही थी, तो मैं बता था। और अभी तक झारखंड की 2 ओलंपियन हो चुकी है महिला ओलंपियन, पहला निक्की प्रधान, उसके बाद सलीमा टेटे। पुरुष ओलंपियन की बात करें तो 5 पुरुष ओलंपिक हो चुके हैं झारखंड के। हमेशा झारखंड का योगदान रहा है भारतीय हॉकी में। और इस बीच यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल लेके निकलने की कोशिश, यहाँ पर निपुणता कुल्लू ने बॉल को बढ़ा दिया। लेफ्ट फ्लैंग में बहुत तेज गति से गेंद निकल गई बाहर। आप याद करें 1928 आम्स्टरडम ओलंपिक, और यहाँ पर मैं बता दूं आपको ये इस वक्त पहला क्वार्टर का खेल इस वक्त समाप्त होता हुआ, और पहले क्वार्टर तक की दोनों टीमों की स्थिति है यहाँ पर 0-0 झारखंड 0। उत्तर प्रदेश हॉकी टीम को भी कोई गोल करने का अवसर अभी तक नहीं मिला है। हम चलेंगे दूसरे क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।
नमस्कार, आदाब, जोहार। चलते हैं दूसरे क्वार्टर में। और अभी तक की स्थिति इस आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शेफाली छोकरी ये हैं, शेफाली हैं, ये आती हैं हरियाणा से और यहाँ पर पुष्पा के साथ खेल की शुरुआत। लाइव एक्शन आप इस वक्त रांची से देख रहे हैं, जबकि मैं बता दूं हॉकी इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है, जहां से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। दूसरा सेमीफाइनल बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। एक तरफ है लाल रंग के जर्सी में मेजबान झारखंड की टीम, दूसरी तरफ से यहाँ पर ब्लू रंग की जर्सी में नज़र में आ रही है, यहाँ पर यह है उत्तर प्रदेश की टीम। उत्तर प्रदेश है इस वक्त स्कोरिंग का ग्राफ, जहाँ तक सवाल है 0, और झारखंड का भी स्कोरिंग है 0। कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। हालांकि झारखंड ने शुरुआती मुकाबले में बहुत धुआंधार हॉकी खेली थी। झारखंड की टीम महाराष्ट्र को 6-0 से पराजित किया, बिहार को 9-0 से, पंजाब को 2-0 से। उत्तर प्रदेश ने शुरुआती मुकाबले में छत्तीसगढ़ को 5-1 से, मिजोरम को 1-0 से और हरियाणा को 2-1 से। लेकिन आज यहाँ किसी भी टीम के चल नहीं पा रही है। झारखंड है 0 और उत्तर प्रदेश भी कोई गोल नहीं कर पाई है। चलते हैं दूसरे क्वार्टर में, और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मरांग गोम के जयपाल से मुंडा स्टेडियम ले चलता हूँ, जहाँ एक ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट चल रहा है दोनों टीमों के बीच। तो जैसे मैं बता रहा था, झारखंड का जहाँ तक सवाल है, झारखंड में हॉकी सिर चढ़कर बोलता है। और मैं बता रहा था 2 ओलंपियन महिला ओलंपियन हो चुकी हैं यहाँ पर। निकी प्रधान जो खूंटी की रहने वाली हैं, हेशल गांव की नाम है उनका गांव का, जबकि दूसरी तरफ से सलीमा टेटे जो भारतीय महिला हॉकी टीम के इस वक्त कप्तान हैं। ये झारखंड से लगभग 120 किलोमीटर दूर सिमडेगा के बड़की छापर नामक गांव से रहती है, और बहुत ही सुदूर गांव से रहती है, जहां पर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के बाद भी ये लड़कियों ने अपने न सिर्फ प्रदेश का नाम बल्कि भारत के नाम को भी रोशन कर रही है। तो पुरुष ओलंपिक की बात कर रहे थे। पहला जब भारतीय हॉकी टीम खेलने गई थी आर्मस्टरडम, हॉलैंड की राजधानी, तो उस भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी जो थी, कप्तान की बागडोर इसी झारखंड के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के हाथों में थी, जिनके नाम से स्टेडियम है और जहां पर अभी आप हॉकी खेल देख रहे हैं। उसके बाद 1972 म्यूनिख ओलंपिक माइकल किंडो ने खेला था, झारखंड के सिमडेगा के रहने वाले। उसके बाद 1980 ओलंपिक लॉस एंजल्स सिलवानी डुंगडू ने खेला था भारतीय हॉकी टीम की तरफ से, इसी सिमडेगा के रहने वाले थे। उसके बाद 1984 लॉस एंजल्स मनोहर टोपनो ने भारतीय हॉकी टीम की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। उससे 1992 बार्सिलोना ओलंपिक, जहां पर अजीत लकड़ा ने खेला था भारतीय हॉकी टीम की तरफ से, वो गुमला के पालकोट के रहने वाले। तो इस तरह से झारखंड के इन जाबाज खिलाड़ियों ने समय समय पर वक्त की क्रांतर में भारतीय हॉकी टीम की तरफ से अपने दमखम का मुजाहरा किया है और प्रतिनिधित्व किया इन लोगों ने। ये थे जाबाज खिलाड़ियों के नाम, ओलंपियन का नाम, जो हम बता रहे थे, जो झारखंड की तरफ से जिन्होंने हॉकी खेला भारतीय हॉकी टीम की तरफ से। और न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के लिए भी अपने तन मन धन को निछावर करते हुए अपनी बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन करके उन्होंने देश का नाम भी रोशन किया। तो इस तरह से 2 महिला ओलंपियन हो चुकी है झारखंड से और 5 पुरुष ओलंपियन। तो इस बीच झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल लंबा हिट लगाई है, बहुत तेज गेंद निकल गई गोल लाइन के बाहर। 0-0 की स्थिति, खेल इस बार ड्रॉ पे चला है। बिल्कुल बहुत मजबूती की तरीके से जो धुआंधार खेल का प्रदर्शन कर रही थी झारखंड टीम प्रारंभिक मुकाबले में, आज झारखंड के विजय रथ को रोक के रखा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की लड़कियों ने। सब जूनियर मुकाबला है, अंडर 17, 17 वर्ष से कम जो लड़कियां उम्र है वो इस मुकाबले में खेल रही है। अंडर 17 सब जूनियर वीमेंस 16 16वीं सब जूनियर हॉकी नेशनल हॉकी चलता हुआ। दूसरा सेमीफाइनल, इसमें झारखंड के खिलाड़ी बॉल लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिना कुल्लू गेंद उनसे छीन गई। आज बिल्कुल झारखंड के
जो ऑफेंस के खिलाड़ी हैं खास करके उनको रोक के रखा है। जैसे पुष्पा मांझी, इन्होंने 3 गोल किया। संदीपा कुमारी के, सुष्मिता गुड़िया, प्रीति बिलून, इन खिलाड़ियों का आज हॉकी का स्टिक बिल्कुल खामोश है। लंबा हिट यहाँ पर मौका है, यहाँ बहुत बेहतरीन हिट लगाया गया था। सर्कल के अंदर से एक बहुत तेज तर्रार हिट लगाई गई थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन झारखंड के खिलाड़ी ने उस हमले को विफल किया। दूसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है। आज झारखंड के लिए बहुत ही, यहाँ कहा जाए तो स्थिति जो है चुनौतीपूर्ण है। आज स्थिति चुनौती से भरी हुई स्थिति। सीटी आइन के पास है बॉल, सरका दिया यहाँ पर। गेंद है सुगन सांगा के पास। सुगन सांगा ने बॉल को बढ़ा दिया यहाँ पर अंकिता लकड़ा के लिए। अंकिता लकड़ा कप्तान है इस वक्त। बॉल लेके निकलने की कोशिश है। गेंद एक बार फिर यहाँ पर है अंकिता लकड़ा के पास, कप्तान झारखंड, लेकिन गेंद से छिन गई। आज ये सामंजस्य तालमेल जो झारखंड की टीम ने पहले खेला था वैसा देखने को नहीं मिल रहा है आज। गेंद एक बार फिर यहाँ पर बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है प्रीति बिलून, लेकिन गलत पास दे बैठी। आज देखिए तालमेल बिखरा हुआ है झारखंड का। ये तालमेल जो पहले आरंभिक मुकाबले में देखने को मिला था वैसा आज नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जो खिलाड़ी है उन्होंने यहाँ ब्लॉकिंग करके रखा है झारखंड के खिलाड़ियों को। कड़ी पेट्रोलिंग कहा जाए की जा रही है। नीलम टोपनो के पास है बॉल। इस वक्त झारखंड के खिलाड़ी, गेंद इस वक्त चली आई है स्वीटी आइन के पास। झारखंड के खिलाड़ी स्वीटी आइन बॉल लेके आगे बढ़ते हुए एक थ्रू पास बढ़ा दिया है लेफ्ट विंगर के लिए। लेफ्ट विंगर एक खिलाड़ी को डिप करते हुए बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे से आए वहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी, बॉल को कलेक्ट किया, राइट विंगर को बढ़ा दिया, तेज पास और लेन यहाँ पर गई बाहर। एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी के पास एक गेंद यहाँ पर प्रीति बिलून के पास। प्रीति बिलून राइट विंगर की तरफ से खेल रहे हैं। प्रीति बिलून मैं बता दूं अभी तक 3 गोल कर चुकी है झारखंड की तरफ से। प्रीति बिलून ने बॉल को यहाँ पर क्रॉस पास बढ़ाने की कोशिश की, गेंद हवा में निकली और यहाँ पर इस वक्त बॉल है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास। बॉल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही थी। लंबा हिट, गेंद एक बार पीछे ले है झारखंड के खिलाड़ी के पास। बॉल सर्किल के अंदर एंट्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सर्किल की एंट्री और देखिए यहाँ पर गेंद गई बाहर। बहुत ही तेज पास इस वक्त मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए अच्छा अटैक कर रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम। गेंद फिर झारखंड के खिलाड़ी के पास, मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए झारखंड के खिलाड़ी बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया है लेफ्ट विंगर को। लेफ्ट विंगर बहुत तेजी के साथ बॉल लेकर निकलते हुए सर्किल के अंदर कोशिश यहाँ पर एंट्री करने की, लेकिन उतना ही था इंटरसेप्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी का। बहुत ही जबरदस्त हॉकी चल रहा है दोनों टीमों के बीच। एक बार फिर है यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी के पास एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल लेके निकलने की कोशिश, पीछे सरका दिया, लंबा हिट यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी का सुगन सांगा का हिट, गेंद गई बाहर और यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा है खेल के निर्णायक का। पुष्पप्रीत कौर ने यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा किया है। दूसरा क्वार्टर में खेल के 9वां मिनट में यहाँ पहला पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई झारखंड की टीम। खतरे का बादल बनराता हुआ उत्तर प्रदेश के ऊपर एक मौका है यहाँ पर झारखंड के लिए
इंजेक्शन स्टॉप, और ये गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। पहला गोल दागती हुई झारखंड की टीम, पहली सफलता यहाँ पर मिली है झारखंड को। बेहतरीन देखिए यहाँ पर किस तरह से ये इंजेक्शन बॉल को स्टॉप और बढ़ा दिया गया साथी खिलाड़ी के लिए, और यहाँ पर ड्रैग, बहुत ही बेहतरीन ड्रैग, और गेंद गई इस वक्त गोल पोस्ट के अंदर। और मैं बता दूं झारखंड की तरफ से ये पहला गोल हुआ, गोल डाला है रेजिना कुल्लू ने। दूसरा क्वार्टर का यहाँ पर 10वां मिनट में रेजिना कुल्लू ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया और झारखंड की तरफ से पहला गोल होता हुआ। बेहतरीन, वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन ऑफ पेनाल्टी कॉर्नर इनटू गोल। झारखंड की रेजिना कुल्लू ने पहली सफलता यहां पर दिलाई है झारखंड को, पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके। तो दूसरा क्वार्टर का 10वां मिनट, अगर हम कुल मैच की बात करें तो खेल के 25वां मिनट में सफलता मिली जा करके। तो खेल के 25वां मिनट में दूसरा क्वार्टर का यहाँ पर 10वां मिनट, यानी कुल 25वां मिनट में यहाँ पहली सफलता झारखंड को मिलता हुआ। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में किया गया, बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह निकली स्टिक से गेंद, और यहाँ पर रेजिना कुल्लू ने एक खूबसूरत गोल बनाया झारखंड के लिए। अब झारखंड यहाँ पर है, यहाँ 1 और यहाँ पर झारखंड 1 और उत्तर प्रदेश 0। उत्तर प्रदेश की चिंताएं इस वक्त बढ़ती हुई। बहुत अच्छा यहाँ पर खेल होता हुआ, बहुत तेज तर्रार हॉकी चलता हुआ। खेल का लगभग 4 मिनट बाकी है, 4.5 मिनट यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का। गेंद इस पर झारखंड के खिलाड़ी के पास, पुष्पा मांझी के पास बॉल, लंबी हिट यहाँ पर कोशिश की गया था और गेंद गई बाहर। पुष्पप्रीत कौर ने इशारा किया कि गेंद जा रही है बाहर। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, अभी समय है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि 4 मिनट और 2 क्वार्टर का समय बाकी है। और जब यहाँ पर अगर 30 मिनट और 35 मिनट की बात करें जो समय बाकी है, ये काफ़ी लंबा समय है इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए। अगर उत्तर प्रदेश के टीम की यहाँ पर अपने खेल कोई रणनीति को बदलती है, आक्रमण को तेज करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि झारखंड की टीम का रक्षक पंक्ति भी बहुत ही मजबूत नज़र आती है और काफ़ी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है इन्होंने पिछला खेल में। हालांकि आज लंबा समय का इंतजार करना पड़ा, 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा झारखंड को पहले गोल के लिए, जबकि आरंभिक मुकाबले में झारखंड ने लगातार धुआंधार प्रदर्शन गोल करती गई थी। फ्री हिट मिलता हुआ खेल के निर्णायक का इशारा इस वक्त उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश 0, झारखंड 1। 3 मिनट 20 सेकंड का समय बचा हुआ है दूसरा क्वार्टर का। सीधा पास साथी खिलाड़ी के लिए, थ्रू पास बढ़ाने की कोशिश, पीछे से आए हुआ झारखंड के खिलाड़ी, लेकिन वहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी पहुँच चुके हैं। बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने खड़े साथी खिलाड़ी को हल्का फ्लिक पास बढ़ाया है, लेकिन वहाँ पर काउंटर हिट है। गेंद एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रीमेंट हुआ, झारखंड के खिलाड़ी को गलत तरीके से रोका गया, फ्री हिट मिलता हुआ झारखंड को। झारखंड 1 और यहाँ पर देखिए शेफाली छोकर, इस वक्त यहाँ पर शेफाली ने एक खिलाड़ी को बाहर भेजा है। ये ममता कुमारी इस वक्त मैदान से बाहर गई उत्तर प्रदेश का। एक बार फिर यहाँ पर सर्किल के ऊपर पहुँच गई झारखंड की टीम, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सर्किल के ऊपर, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्ट वहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी का लंबा हिट जमाया है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी की टीम ने अपने राइट आउट के लिए बॉल को बढ़ाया था, राइट आउट पीछे रह गई, गेंद के अंदर गति, गेंद निकल गई बाहर। तो स्थिति इस वक्त है यहाँ पर 0-1। दूसरा क्वार्टर का खेल प्रगति पर है, बहुत स्कूप किया, ऊंची उड़ती हुई गेंद झारखंड के खिलाड़ी ने, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी का। रूबी यादव के बॉल, रूबी यादव ने अपने साथी खिलाड़ी बढ़ाया, लेकिन वहाँ बहुत तेज तरीके से पहुँच गई है झारखंड की। यहाँ पर शिवानी
करकट्टा पहुंच गई थी और यहाँ पर हिट किया था शिवानी करकट्टा ने, लेकिन गोलपोस्ट से काफ़ी बाहर मार गई। बीच यहाँ पर है अनुपाल के पास है बॉल, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अनुपाल साथी खिलाड़ी के पास बढ़ा दिया है और यहाँ पर लंबा हिट, गेंद एक बार फिर यहाँ पर अनुपाल के पास, बहुत अच्छा पास, अच्छी तालमेल के साथ गलती है यहाँ पर दिव्या यादव के पास है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी दिव्या यादव अभी भी बॉल को कलेक्ट किए हुए हैं। एक डायगनल पास बढ़ाने की कोशिश की दिव्या यादव ने, गेंद उनसे छिड़ गई है पर सफलता मिली है। पर अंकिता लकड़ा को जो कप्तान है झारखंड के, बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बढ़िया पास ऋचा मिंज के लिए, ऋचा मिंज स्ट्राइक सर्किल के अंदर पहुंचती हुई और गिर पड़ी वहाँ ऋचा मिंज, सफलता मिली वहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को। बहुत ही तेज हॉकी चल रहा है इस वक्त, दोनों टीमें अपना सर्वोच्च निछावर करती हुई। गेंद इस वक्त यहाँ पर चली आई है दिव्या यादव के पास, अच्छी खेलती यहाँ पर हॉकी खेल रही है दिव्या यादव। 82 से आज है कप्तान उत्तर प्रदेश की। गेंद गई बाहर इस वक्त गोल लाइन टच लाइन का और खेल चला गया है आखिरी मिनट में, दूसरा क्वार्टर का आखिरी मिनट में। समांतर पास इस वक्त यहाँ बॉल वैशाली सिंह सेन के लिए और गेंद गई बाहर। काफ़ी कोशिश कर रही है, इसको भी किसी हालत में कम नहीं आंकना पड़ेगा। आद्या यादव के पास है बॉल, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आद्या यादव ने बॉल को सरका दिया समांतर पास दिव्या के लिए और दिव्या ने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने की कोशिश की। 30 सेकंड का समय बचा हुआ है, दूसरा क्वार्टर का बहुत ही तेज हॉकी चल रहा है। लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त झारखंड के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए, बहुत अच्छा पास थ्रू पास यहाँ पर लेफ्ट विंगर को एक खिलाड़ी को ड्रिल करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, फ्री मिलता हुआ। डॉटेड लाइन के ऊपर से इस वक्त झारखंड आक्रमण के ऊपर उतारू है और लंबा हिट किया है, अच्छा मौका है झारखंड के लिए, एक बार फिर सर्किल एंट्री करती हुई और ये टॉम हॉक यहाँ पर, लेकिन गेंद गई बाहर। कोशिश की गई थी इस बार झारखंड के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का समय बिल्कुल नज़दीक है और गेंद गई इस वक्त टच लाइन के बाहर और यहाँ हुटर बजा। दूसरा क्वार्टर का समय खत्म हुआ, दूसरा क्वार्टर का समय खत्म होने का स्थिति है 1-0 और खेल के 25वां मिनट में जो झारखंड के रेजिना कुल्लू ने
नमस्कार, जोहार, आदाब। चलिए एक बार फिर चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची का मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। मैं समीमा नाम को लिए चलता हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय खूबसूरत स्टेडियम जहाँ 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। टीमें हैं सामने, एक तरफ से मेजबान झारखंड की टीम, दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश की टीम। स्थिति इस वक्त 1-0 है। खेल के यहाँ पर 25वां मिनट में जो गोल हुआ था वो अभी तक पेनाल्टी कॉर्नर से झारखंड की तरफ से रेजिना कुल्लू ने गोल डाला था, वो गोल अभी तक कायम है। तो परिस्थिति जो बतला रही है वो बतला रही है इस वक्त यहाँ पर एक बार फिर झारखंड का बेहतरीन यहाँ पर हिट, लेकिन बाहर मार गई और जो परिस्थिति बनने वाली थी वो फिलहाल इस वक्त नहीं है। तो मैं बता दूं, झारखंड इस वक्त 1-0 से आगे है दूसरे सेमीफाइनल में। बहुत ही ज़बरदस्त खेल चलता हुआ। तो परिस्थिति से यहाँ उबरने के लिए, इस कठिन स्थिति से उबरने के लिए यहाँ पर ज़रूरत है उत्तर प्रदेश को एक गोल की। और क्या स्थिति बनेगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पर 1-0 बहुत ही गजब का एक चुनौती भरी मुकाबला हो रही है दोनों टीमों के बीच, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर झारखंड के बीच। उन व्यूवर के लिए जिन्होंने अभी अभी खेल देखना शुरू किया होगा, मैं बता दूं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम नीली रंग की जर्सी में है, ब्लू रंग की जर्सी में, जबकि लाल रंग जो खतरे का सूचक है इस वक्त झारखंड की टीम लाल रंग की जर्सी में खेल रही है। श्रुति कुमारी थी सामने, वहाँ पर फ्री हिट मिलता हुआ इस वक्त उत्तर प्रदेश को अपने क्षेत्र से। समांतर पास उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर अपने रक्षाबंधन के खिलाड़ी के लिए बॉल को भेज दिया। डायगोनल पास लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त 23 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त बढ़ते हुए तेज पास यहाँ पर लेफ्ट विंगर के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया है। बहुत बढ़िया पास 23 मीटर रेखा के पास पहुँचते हुए, लेकिन बॉल को यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी ने कब्जे में किया और इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ झारखंड को। झारखंड 1 उत्तर प्रदेश 0। बहुत तेज हॉकी चल रहा है। तीसरा क्वार्टर का खेल शुरू होता हुआ झारखंड के खिलाड़ी के पास है बॉल, यहाँ पर सेंटर लाइन के पास लेफ्ट फ्लैंक में 23 मीटर रेखा के पास बॉल को बढ़ा दिया गया है। लेफ्ट विंगर को एक सुरक्षित पास बढ़ाने की कोशिश, बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है पुष्पा मांझी इस वक्त। सर्किल एंट्री करती हुई झारखंड की टीम, और यहाँ पर लॉन्ग कर्नर हिटिंग का इशारा है झारखंड के लिए। शेफाली जो है वो जो हरियाणा से आती हैं, जो खेल को आज संचालित कर रही है, इशारा किया है लॉन्ग कर्नर हिटिंग के लिए झारखंड के लिए। झारखंड के खिलाड़ी के पास इस वक्त बॉल, साथी खिलाड़ी की तलाश, लंबा हेड, सुरक्षित पास, अच्छा मौका है यहाँ पर झारखंड के लिए। सर्किल के अंदर गेंद घूम रही थी, बहुत अच्छा पास भी बढ़ाया गया था, कैरेट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ इस वक्त उत्तर प्रदेश को। बाएं फ्लैंक से एक बार चल पड़ी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी, बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ उत्तर प्रदेश को। सेंट्रल लाइन के पास लेफ्ट फ्लैंक से सीधा पास, बहुत अच्छा एक कलात्मक हॉकी खेल रही है दोनों टीमें। बेहतरीन हॉकी को देखने को मिल रहा है, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला इस वक्त चलता हुआ यहाँ पर। मध्यरेखा से क्रॉस करते हुए यहाँ पर सेंट्रल लाइन को क्रॉस करते हुए लेफ्ट फ्लैंक से बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश बहुत तेज निकल रही थी, श्रुति कुमारी निकल रही थी। गेंद अभी भी श्रुति कुमारी के पास है झारखंड की। सर्किल एंट्री करती हुई अच्छा मौका यहाँ पर, लेकिन गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया उत्तर प्रदेश के गोलकीपर वर्षा सिंह ने। गेंद उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास, दिव्या यादव के पास, दिव्या यादव बॉल को पीछे सरकाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। वहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी तैयार थी। गेंद एक बार फिर यहाँ पर दिव्या यादव के पास, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ उत्तर प्रदेश को। लंबा हिट लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त अब बॉल लेके निकलने की कोशिश। गेंद है अनुपाल के पास, यहाँ पर अनुपाल ने बॉल को बढ़ा दिया आद्या यादव के लिए। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बॉल को बढ़ाते हुए, लेकिन बीच में से अच्छा इंटरसेप्ट झारखंड के खिलाड़ी का। बहुत बेहतरीन पास, लेफ्ट विंगर के लिए पास, बहुत तेज हिट लगाई गई है और यहाँ पर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाई झारखंड के खिलाड़ी। बहुत तेज गति से गेंद निकल गई। श्रुति कुमारी वहाँ बढ़ रही थी बॉल को कलेक्ट करने के लिए। फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर रूबी यादव हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी।
रूबी यादव स्कूप किया है रूबी ने वहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए। अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी का है। खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए देखिए किस चतुराई के साथ बॉल को बढ़ाने की कोशिश साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहाँ पर मौजूद थी सर्किल के अंदर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया रूबी यादव ने, और अभी भी रूबी यादव के पास बॉल को हिट किया है रूबी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए। बीच में से अच्छा इंटरसेप्ट झारखंड के खिलाड़ी का। अब झारखंड का आक्रमण बनाता हुआ लेफ्ट लेन से सर्किल एंट्री करते हुए समांतर पास, लेकिन वहाँ इंफ्रीमेंट हो गया। लगभग 6 मिनट का खेल हो चुका है तीसरा क्वार्टर का। इतनी तेज की खेल की गति तेज है और इतनी तेज कमेंट्री भी करनी पड़ रही है कि समय का नहीं पता चल रहा है। बहुत अच्छा पास, एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी के पास है बॉल। झारखंड दूसरे गोल की तलाश में इस वक्त मैदान के अंदर भटक रही है। उनके खिलाड़ी इस वक्त बहुत तेज कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी के पास है बॉल। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश, लेकिन यहाँ इशारा है खेल के निर्णायक का। कैरेड वो हाथ में गेंद टकराई। फ्री हिट मिलता हुआ उत्तर प्रदेश को। अनुपाल के पास है बॉल। उत्तर प्रदेश से अनुपाल ने बॉल को समांतर पास बढ़ा दिया था अपने साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत अच्छा पास, एक ऊंची उड़ती हुई गेंद और बॉल के पीछे भाग रही इस वक्त झारखंड के खिलाड़ी। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अंडर 17 जो 17 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों के बीच खेला जा रहा है। दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर हॉकी इंडिया की यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं शमीम आलम आपका खैर मकदम, आपका स्वागत करता हूँ। अभिनंदन है आपका जो हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं। हार्दिक स्वागत है आपका। इस बीच अनुपाल के पास है बॉल। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अनुपाल, लंबा हिट लगाया है अनुपाल ने। गलत पास से बैठी झारखंड के खिलाड़ी के पास गेंद चलाई और झारखंड के खिलाड़ी के पास एक बार समांतर पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने की कोशिश कर रही हैं इस वक्त। अच्छा पास, सुरक्षित पास। अभी भी झारखंड के खिलाड़ी के पास है बॉल। साथी खिलाड़ी की तलाश, गेंद गई बाहर। फ्लिट मिलता हुआ झारखंड को सेंटर लाइन के पास राइट फ्लैंक से। स्थिति है इस वक्त 1-0। तीसरा क्वार्टर का लगभग 8 मिनट का खेल हो चुका है। 7 मिनट का खेल बाकी है। बहुत तेज हॉकी चलता हुआ। कभी अटैक करती है झारखंड की टीम तो काउंटर अटैक उत्तर प्रदेश की टीम। और शेफाली का इशारा यहाँ पर। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जो मैं बता दूं ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था और 15 नवंबर 26 को ये 26 वर्ष का सालाना ये उत्सव मनाएगी। झारखंड स्टेट मनाएगा और उस वक्त 26 वर्ष झारखंड का कहा जाए तो उम्र हो जाएगा इस प्रदेश का 15 नवंबर को। यानी लगभग 6 महीने के बाद हमारे 25 वर्ष की का लंबा सफ़र इस वक्त तय कर लिया है झारखंड स्टेट ने। काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है झारखंड ने। और मैं बता दूं हालांकि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर एक राज्य है जहां पर कोयला से लेकर अबरख मैग्नीज काफ़ी मैग्नी मिलते हैं यहाँ पर। तांबा, बॉक्साइट, चूना पत्थर और कई उर्वरक यहाँ पर। सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना है यहाँ पर। बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर स्टील प्लांट। काफ़ी अगर कहा जाए तो सघन जंगल भी हैं झारखंड में। यहाँ पर एक जलप्रपात, झरने देखने लायक है और काफ़ी मनोहर दृश्य है होता है जब जंगल में पलाश के फूल खिलते हैं और बीच जंगल सन्नाटे के बीच एक बांसुरी वादक जब अपने बांसुरी को तान को छेड़ता है तो सन्नाटे को चीरते हुए जो ध्वनि निकलती है दिल को मोह लेती है। तो ऐसा प्रदेश है झारखंड जो नदी, जलप्रपात, बहते हुए नदी, गिरते हुए झरने, कई प्राकृतिक सौंदर्य से ये भरपूर है प्रदेश। और इस बीच एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जी करती हुई झारखंड की टीम।
आपसी मंत्रणा चल रही है। एक मौका है इस वक्त यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का 10वां मिनट में यहाँ पर एक पेनाल्टी कॉर्नर मिलता हुआ झारखंड के लिए। जैसे नंबर 12 मरियम भेंगड़ा इस वक्त पहुंची हुई है इंजेक्शन के लिए। इंजेक्ट किया यहाँ पर, देखिए मौका हाथ से निकला यहाँ पर झारखंड के हाथ से। ये मरियम भेंगड़ा जी ने यहाँ पर इंजेक्ट किया था, ये मौका नहीं निकाल पाई झारखंड की टीम। कॉर्नर गया बेकार। वन जीरो झारखंड एक बार फिर इंजेक्ट, यहाँ पर बहुत बढ़िया हिट लगाया था लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट बीच में। यहाँ पर है रूबी यादव के पास है बॉल, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी है, साथी खिलाड़ी को बढ़ाया डायनर पास, गेंद निकल गई इस वक्त टच लाइन के बाहर। 2-3 खिलाड़ी इंतजार हैं इस वक्त, रुमाल लेके इशारा करती हुई कोई खिलाड़ी बाहर आएगी, उनका स्थान लेगी। यहाँ पर आतुर है मैदान में आने के लिए उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी। अनुपाल के पास है बॉल, शिवांगी खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा नपातुला पास, गिर गई बाहर। नैना वहां पर मौजूद है उत्तर प्रदेश की, नैना लंबा हिट, गिर गई बाहर। और अब यहाँ पर एक बार फिर फ्री हिट मिलता हुआ उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की टीम बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पर आज डट के मुकाबला किया है झारखंड का। और झारखंड की जो तेवर था बिल्कुल, जो पहले दूसरे और तीसरे मैच में जो गोल की स्थिति थी 6-9-2, उसको आज रोक के रखा है। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया गया। जो खेल के 25वां मिनट में रेजिना कुल्लू ने तब्दील किया था वो अभी तक कायम है, लेकिन उसके बाद फर्दर कोई गोल नहीं हुआ झारखंड की तरफ से। तो झारखंड को इस मुकाबले में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर बराबरी का गोल कर ली उत्तर प्रदेश की टीम तो फिर खतरा बढ़ेगा झारखंड के लिए। इसलिए यहाँ पर अंतिम समय तक झारखंड की टीम को अपने दमखम को कायम रखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से, क्योंकि हॉकी बहुत तेज खेल होता है, अंतिम समय तक जो भी टीम अपने दमखम को कायम रखेगी सफलता निश्चित रूप से उसे ही मिलेगी, क्योंकि हॉकी बहुत तेज खेल होता है और मिनट नहीं बल्कि सेकंड में परिणाम बदल जाते हैं। एक बार फिर यहाँ पर झारखंड का क्रम पनपता हुआ 10 मीटर रेखा को क्रॉस करने की कोशिश, इंक्रीमेंट हुआ, फिर हिट दे दिया गया है यहाँ पर अपने क्षेत्र से उत्तर प्रदेश को। तो मैं जैसे बता रहा था, इतनी तेज खेल हॉकी है, यहाँ मिनट नहीं बल्कि हम सेकंड में परिणाम की बात करते हैं और सेकंड में परिणाम बदल जाते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, पहला दिन जो 1 अप्रैल को मुकाबला, एक अच्छा यहाँ पर अच्छा मौका झारखंड के लिए, अच्छा डिफ्लेक्शन, और ये गई इस वक्त गेंद गोल पोस्ट के अंदर। जर्सी नंबर 9 संदीपा कुमारी ने यहाँ पर गोल किया खेल के तीसरा मिनट का 13वां मिनट में। संदीपा कुमारी ने यहाँ पर गोल किया है तीसरा क्वार्टर का 13वां मिनट, यानी 43वां मिनट में गोल हुआ संदीपा कुमारी के द्वारा, सेकंड गोल 43वां मिनट में। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, देखिए सैफाली से। इस वक्त जैसे नंबर 13 दिव्यांशी सिंह जो हैं, ये कप्तान हैं उत्तर प्रदेश की, बात कर रहे हैं सैफाली से। क्या कन्फ्यूजन हुआ है पता नहीं, लेकिन ये शेफाली सिंह जो कप्तान हैं उत्तर प्रदेश की, वो अंपायर शेफाली छोकर जो है शेफाली से बात कर रही है। शेफाली ने यहाँ पर बुलाया है अपने दूसरे साथी अंपायर खुशप्रीत कौर को बुलाया है, और खुशप्रीत कौर से शेफाली इस वक्त वार्ता करती हुई।
और यहाँ पर शेफाली ने मदद मांगी है वीडियो अंपायर से। अभी भी दिव्यांशी सिंह जो है वो बात कर रही थी अंपायर से, और शेफाली ने यहाँ पर वीडियो अंपायर से इस डिसीजन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है यहाँ पर मदद मांगी। और अंततः गोल का डिसीजन दिया गया। धुंध जो था वो बिल्कुल साफ हो गया, और इस तरह से झारखंड की टीम दूसरा गोल करती हुई संदीपा कुमारी ने यहाँ पर गोल किया अपने टीम के लिए। खेल के 43वां मिनट में यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का कुल मुकाबले का समय की बात करें तो खेल के 43वां मिनट में यहाँ पर एक बेहतरीन गोल किया है संदीपा कुमारी ने। संदीपा कुमारी मैं बता दूं इससे पहले 4 गोल कर चुकी है। अगर इस गोल को हम काउंट करें तो संदीपा कुमारी के द्वारा 5 गोल हो जाएगा। तो अब तीसरा क्वार्टर का समय बिल्कुल नज़दीक है, 1 मिनट 35 सेकेंड यानी 1.5 मिनट का लगभग समय बचा हुआ है। झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल। झारखंड की इस गोल के बाद झारखंड के खिलाड़ियों का निश्चित रूप से मानसिक दबाव अब बढ़ेगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के ऊपर, और झारखंड के खिलाड़ियों का जो है मनोबल बढ़ेगा और नई स्फूर्ति का दहन होगा, एक नई ऊर्जा का संचार होगा इन खिलाड़ियों के अंदर, झारखंड के खिलाड़ियों के अंदर। क्योंकि जब भी कोई भी टीम जीतती है तो उसका हौसला बढ़ता है, आगे गोल करने के लिए उनके खिलाड़ी प्रेरित होते हैं, और यहाँ पर इस वक्त दबाव बढ़ेगा उत्तर प्रदेश के ऊपर। खेल चला गया है आखिरी मिनट में। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो 1 अप्रैल से चला था, यहाँ पर मुकाबला धीरे धीरे ये हॉकी का कारनामा अपने मंजिल की तरफ पहुँचता हुआ, और कल है विश्राम का दिन। परसों सुबह 10 बजे होगा हार्ड लाइनर का मुकाबला, और शाम को 4 बजे होगा फाइनल मुकाबला। मैं बता दूं एक तरफ से यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम पहुंच गई है फाइनल में। मध्य प्रदेश ने पराजित किया उड़ीसा को 2-1 से, और फाइनल के लिए पहुंच गई है, क्वालिफाई कर गई है। और इस मुकाबले के बाद जो टीम जीतेगी वो मध्य प्रदेश से भिड़ेगी 12 तारीख को शाम 4 बजे इसी स्टेडियम के अंदर। तो खेल अब यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ पर हूटर इस वक्त बजता हुआ इस बात का संकेत कि तीसरा क्वार्टर का समय खत्म हुआ। मैं सेमीफाइनल में मिलूंगा आपके फिर चौथे क्वार्टर में, और ये बताते हैं कि ये स्थिति यहाँ पर झारखंड ने अपने मजबूत कर लिया है। झारखंड 2 उत्तर प्रदेश 0।
नमस्कार, जोहार, आदाब। चलिए एक बार चलते हैं फिर मनांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची का मैं आपको ले चलता हूँ, जहाँ एक बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। एक तरफ से है उत्तर प्रदेश की भी टीम, तो दूसरी तरफ से है झारखंड की टीम। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का मुकाबला चल रहा है। इस वक्त अंतिम क्वार्टर में हम चल रहे हैं, यानी चौथा क्वार्टर। और मैं बता दूं स्थिति इस वक्त है, झारखंड 2 गोल कर चुकी है उत्तर प्रदेश के विरुद्ध। मात्र अब 15 मिनट समय बचा है उत्तर प्रदेश को यहाँ पर बराबरी पर आने के लिए 2 गोलों की ज़रूरत है। लेकिन क्या कर पाती है उत्तर प्रदेश की टीम, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सफलता भविष्य के घर में छिपा हुआ है। झारखंड एक बार फिर अटैक करती हुई, और यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का इशारा झारखंड के लिए। यहाँ पर मौका है स्कोरिंग का, ग्राफ को बढ़ाने का। अच्छा मौका है झारखंड के लिए। लाल रंग की जर्सी जो पहनी हुई है झारखंड, लाल रंग का जो खतरे का सूचक कहा जाता है, उसका अनुरूप आज यहाँ प्रदर्शन, उतना धुआंधार तो प्रदर्शन नहीं हुआ झारखंड का जैसे पहले कर रही थी, लेकिन फिर भी चलिए जो जीता वही सिकंदर। श्रुति कुमारी का इंजेक्शन स्टॉप, और यहाँ पर ये ड्रैग, लेकिन अच्छा बचाव। फीट मिलता हुआ यहाँ पर सर्किल के ऊपर फीट मिलता हुआ बॉल को यहाँ पर क्रॉस पास बढ़ाया है, लेकिन अच्छा यहाँ पर अच्छा टैकलमेंट इस वक्त उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी का। गेंद है अंशु कुमारी के पास। इस वक्त उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अंशु कुमारी बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही हैं। क्वार्टर 4 का मुकाबला चल रहा है। इस वक्त मानसिक दबाव बढ़ेगा उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि झारखंड की टीम ने दूसरा क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर में सफलता प्राप्त किया। एक पेनल्टी कॉर्नर, एक फील्ड गोल। बॉल है इस वक्त झारखंड के खिलाड़ी के पास है बॉल। ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स की दाईं तरफ चली गई है झारखंड की टीम लाल रंग की जर्सी में, बाईं तरफ है उत्तर प्रदेश की टीम पीले रंग की जर्सी में। सर्किल एंट्री करने की चाह रही है झारखंड की टीम। इस वक्त यहाँ पर पुष्पा मांझी के पास थी गेंद, बॉल को साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया था, गेंद निकल गई इस वक्त टच लाइन के बाहर। सोलहवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अंडर 17 17 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों की ये मुकाबला चल रहा है। इस वक्त गेंद थाल में भेंगड़ा ने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया था। 3 खिलाड़ियों के झुरमुट में से बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर निपुणता कुल्लू एक मौके को तलाश रही है। टॉम हॉक को अच्छा मौका यहाँ पर मिला था। एक बार फिर धीरे देखिए यहाँ पर अटैक कर रही है झारखंड की टीम, और यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का इशारा है झारखंड के लिए। हलचल मचाने की कोशिश इस वक्त विरोधी खेमे में झारखंड के खिलाड़ियों के द्वारा, क्योंकि झारखंड को जीत के लिए दबाव बना के रखना पड़ेगा। अंतिम समय तक अपने खेल की गति को कायम रखना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है। नहीं तो 2 गोल कोई हॉकी में वैसा मायने नहीं रखता है। सुगन शांगा इस वक्त पहुंची हुई है अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए। स्पोर्ट पर यहाँ पर इंजेक्ट किया, रोका गया स्टॉप, और यहाँ पर बहुत तेज हिट, बहुत अच्छा ड्रैग, लेकिन गोलपोस्ट से बाहर। बहुत तेज ड्रैग लगाया गया था, लेकिन गोलपोस्ट से बाहर। आदित्य यादव ने बॉल को हिट किया है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के लिए। उत्तर प्रदेश की तरफ से जहाँ तो पहला क्वार्टर में बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया था, दूसरा क्वार्टर में भी बहुत हद तक, लेकिन गोल होने के बाद जो फर्दर उत्तर प्रदेश का जो है ग्राफ, जो अटैकिंग ग्राफ है, वो घटा है। और यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी के पास है बॉल, सीधा पास, गेंद बढ़ा दिया गया सुगन सांगा के लिए। सुगन सांगा साथी खिलाड़ी को बॉल को बढ़ाया पुष्पा मांझी ने,
पीछे से चले आए, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट किया, 23 मीटर रेखा के पास पहुँच गए हैं इस वक्त। यहाँ पर अंशु कुमारी थी पहुँची हुई, इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री मिलता हुआ झारखंड को राइट फ्लैंक से। सेंटर लाइन के ऊपर लंबा हिट यहाँ पर, और बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर अच्छा पंत के खिलाड़ी ने बॉल को कलेक्ट करके सीधा पास बढ़ा दिया। गेंद इस वक्त चली आई थी राशि सिंह के लिए, लेकिन राशि सिंह अभी भी कोशिश कर रही हैं। इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री मिलता हुआ इस वक्त झारखंड को। झारखंड 2 उत्तर प्रदेश 0। और झारखंड के खिलाड़ी स्वीटी आइंद अपने साथी खिलाड़ी रक्षापंथी के खिलाड़ी को भेज दिया। डायनर पास राइट फ्रंट से एक बार बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, सेंटर लाइन के पास एक खूबसूरत पास झारखंड के खिलाड़ी के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बीच झारखंड के खिलाड़ी ने एक बार फिर बॉल को संभाल लिया है। पीछे डीप डिफेंडर के लिए बॉल को भेज दिया गया यहाँ पर स्वीटी आइंद के लिए। स्वीटी आइंद की गेंद एक बार फिर स्वीटी आइंद के पास, सीधा पास, धीरे धीरे बॉल लेके निकलने की कोशिश, बहुत ही तेज पास। इस वक्त बॉल लेके निकलते हुए बॉल को बढ़ा दिया गया है यहाँ पर नीलम टोपनो के लिए। नीलम टोपनो बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है, सर्किल के अंदर बेहतरीन पास, लेकिन गेंद यहाँ पर बेहतरीन क्लियरेंस मानसी सागर के द्वारा। बहुत देर से इस वक्त झारखंड के खिलाड़ी बॉल को अपने पास रख रहे हैं। अगर हम पोजीशन ऑफ बॉल की बात करें तो झारखंड के खिलाड़ी ज़्यादा समय तक बॉल को अपने पास रख रहे हैं। कद्दू का इस वक्त यहाँ पर सफलता मिली है अनुप पाल को, बॉल को बढ़ा दिया गया है यहाँ पर राशि सिंह के लिए। राशि सिंह बॉल लेकर निकलने की कोशिश, दाएं फ्लैंक में क्रॉस पास, अच्छा बॉल, बेहतरीन क्रॉस पास बढ़ाया था राशि सिंह ने, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी वहाँ पर बॉल को ले नहीं पाए। अन्यथा अगर डिफ्लेक्शन किया जाता तो खतरा बन सकता था। फिलहाल यहाँ पर 6 मिनट का खेल खत्म होता हुआ चौथा क्वार्टर का, 9 मिनट का खेल बचा हुआ इस वक्त। झारखंड का एक बार फिर काउंटर अटैक, लेकिन गेंद इस वक्त चली आई उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास। बॉल अपनी क्षेत्र में बॉल को पीछे सरका दिया गया था गुरमीता के लिए। गुरमीता बॉल को कलेक्ट करने के बाद बहुत ही अच्छा नपातुला पास बढ़ा दिया आकांक्षा मित्रा के लिए। आकांक्षा मित्रा ने बॉल को एक लंबा पास बढ़ा दिया है अरिका कुमारी के। अरिका कुमारी अभी तक मैं बता दूं ये 3 गोल कर चुकी हैं अपनी टीम के, एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश की अरिका कुमारी। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, मानसी के पास बॉल, मानसी सागर ने बॉल को बढ़ाने की कोशिश की, फ्री मिनट हुआ, फ्री मिलता हुआ स्वीटी आइंद पहुँच गई वहाँ पर झारखंड की खिलाड़ी फ्री लेने के लिए। स्वीटी आइंद अपने क्षेत्र से स्कूप किया, स्वीटी आइंद ने ऊंची उड़ती हुई गेंद मध्य रेखा के पास, सेंटर लाइन के पास बॉल को बढ़ा दिया गया था यहाँ पर शिवानी करकट्टा के लिए। शिवानी करकट्टा से गेंद छिन गई, वापस सफलता मिली है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मानसी सागर बॉल लेके निकलने की कोशिश, पीछे सरका दिया। अच्छी पास से खेलती है उत्तर प्रदेश की भी टीम, लेकिन जहाँ तक स्कोरिंग का सवाल है अभी तक स्कोर नहीं हो पाया है। ये दुखद पहलू है उत्तर प्रदेश के लिए। 16 गज की टीम झारखंड के लिए 7 मिनट का खेल खत्म हो गया, 8 मिनट का खेल बचा हुआ है। इस 8 मिनट के खेल में कमाल करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को, तभी कुछ बात बनेगी। पीछे से आए झारखंड के खिलाड़ी अपने सर्किल के अंदर बढ़ते हुए कदम जो बढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश को, उसको विफल किया। अरिका कुमारी पहुंच गई थी। अरिका कुमारी मैं बता दूं अभी तक 3 गोल कर चुकी है, और इस परिस्थिति से यहाँ पर निपटने के लिए बहुत बेहतरीन मौका को ढूंढ रही है झारखंड की टीम। एक बार फिर अपना स्कोरिंग को बढ़ाने की कोशिश, लेकिन जहाँ तक सवाल है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सवाल है, स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश का शिड्न। उत्तर प्रदेश की टीम जूझ रही है मैदान के अंदर, जरूर अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है उत्तर प्रदेश की टीम, लेकिन जहाँ तक सफलता का सवाल है, सफलता अभी कोसों दूर नजर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश की भी टीम हार नहीं मानने वाली है, अंतिम समय तक लड़ेगी उत्तर प्रदेश की टीम, क्योंकि खेल के अंदर जरूर कुछ ऐसी बात है, तभी तो सेमीफाइनल तक पहुंची है उत्तर प्रदेश की टीम। लय जरूर है इनका, आपसी तालमेल, सामंजस्य, स्किल खिलाड़ियों का जरूर है, इनके खिलाड़ियों का भी, लेकिन बात है जहाँ तक स्कोरिंग का,
स्कोरिंग अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर अंकिता लकड़ा के पास थी गेंद, जो कप्तान है झारखंड के, गेंद से छीन गई। सफलता मिली है उत्तर प्रदेश को, बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। बॉल के ऊपर नियंत्रण कभी कभी अच्छा दिखता है यहाँ पर, सिर्फ भी ज़्यादा ने बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। इस वक्त यहाँ पर बॉल को ममता कुमारी के लिए अच्छा पास, धीरे धीरे निकलने की कोशिश, क्षेत्र में यहाँ पर सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहाँ पर, बॉल को सुरक्षित पास निकाल दिया है झारखंड के खिलाड़ी के द्वारा। झारखंड का काउंटर अटैक यहाँ पर पहुंच गया स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, गोलकीपर आगे आए और उन्होंने बॉल को बाहर किया। ये उत्तर प्रदेश के फरीदा खातून ने, और सॉरी यहाँ वर्षा सिंह ने बॉल को बाहर किया। गोलकीपर वर्षा सिंह है उत्तर प्रदेश के। अच्छा मौका देखें यहाँ पर, हिट, गेंद गई बाहर। चौथा क्वार्टर का 5 मिनट 26 सेकंड का समय। सूरज पश्चिम की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपने डूबने वाले स्थान की तरफ गमन करता हुआ, और इस वक्त मैदान के अंदर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी होती हुई इस बात का द्योतक कि अब शाम ढलने वाली है। और उम्मीदें इस वक्त जो है झारखंड का प्रज्वलित होती हुई, लेकिन उम्मीदों की शाम ढल रही है इस अभी अगर कहा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सुंदर तो मैं बता दूं स्थिति इस वक्त यहाँ पर जो है 0-2 है, और इस परिस्थिति से उबरने के लिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको उत्तर प्रदेश के लिए 2 गोलों की ज़रूरत है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतेगा यहाँ पर मानसिक दबाव बढ़ेगा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के ऊपर। सूरज पश्चिम की ओर लगातार बढ़ता हुआ अपने डूबने वाले स्थान पर तैयार, लेकिन यहाँ पर उम्मीदों की किरण इस वक्त यहाँ पर वो धूमिल हो रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। और इस वक्त सुंदर सलोनी शाम ढलने को तैयार, लेकिन उम्मीदों की शाम ढल रही है उत्तर प्रदेश का। दूसरी तरफ से यहाँ पर ये झारखंड का जो है इस वक्त उम्मीद अभी तक बरकरार, क्योंकि वक्त का तकाजा है, वक्त बतला रही है कि यहाँ पर अब समय बहुत कम है उत्तर प्रदेश के लिए, और 2 गोल का इस स्कोरिंग के आंकड़े को यहाँ छूना इतना आसान नहीं है इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। इस वक्त खिलाड़ियों की परछाइयाँ लंबी होती हुई इस बात का द्योतक कि अब शाम ढलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आज झारखंड ने
जो खेल पहले दिखलाया था अपेक्षाकृत 3 मुकाबले जो झारखंड ने खेले थे, आज वैसा झारखंड की टीम नहीं प्रदर्शन कर पाई, क्योंकि सामने एक मजबूत टीम उत्तर प्रदेश थी और आज पूरा खुल के खेलने का मौका नहीं मिला झारखंड को। जाके उत्तर प्रदेश के डी के ऊपर आक्रमण करने का उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी झारखंड के खिलाड़ियों को रोक के रखा, ब्लॉकिंग करके रखा। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से कोई भी गोल नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक सवाल है स्कोरिंग का, इस वक्त 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है झारखंड की टीम। और झारखंड का अब फाइनल में प्रवेश लगभग होने को है, 1 मिनट का मात्र समय बचा हुआ है झारखंड का। यहाँ पर ये चौथा क्वार्टर का समय खत्म होने में, और इस 1 मिनट में क्या कर पाती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम। 1 मिनट तक अपने आक्रमण को बरकरार रखना पड़ेगा यहाँ पर झारखंड को, क्योंकि जैसे एक टीम को सुस्ता जाती है दूसरी टीम हावी हो जाती है। लेकिन वक्त का तकाजा है, वक्त बतला रहा है कि अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, दरवाजे बंद हो चुके हैं। यहाँ पर सफलता का और जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई इस वक्त झारखंड की उम्मीदें अभी भी बरकरार, और झारखंड का वो फाइनल में प्रवेश होना बिल्कुल लगभग अब यहाँ पर निश्चित हो गया है। और इस बात का सुनिश्चित करती हुई झारखंड की टीम, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, कि वो टीम अब ये फाइनल में पहुँच गई है। अब फाइनल में झारखंड का मुकाबला होगा मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को पराजित कर दिया था यहाँ पर 2-1 से। तो जमीन चमन, और यहाँ पर मुकाबला समाप्त हुआ, चौथा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। ये बताते हैं कि यहाँ पर झारखंड ने एक धमाकेदार जीत दर्ज की, 0 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर दिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश को। मैं शमी आलम अपने पूरी प्रोडक्शन टीम और उदय कौशिक के प्रोडक्शन हेड के साथ आपको हॉकी इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस ले चलता हूं, और ये बताते हुए कि मिलेंगे हम फाइनल में, जब मेजबान झारखंड का मुकाबला होगा मध्य प्रदेश से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।